Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइज, हम लोग कन्वेक्शन के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ना, फ्री एंड फोर्स्ड कन्वेक्शन कंबाइंड। और येस्टरडे, आई थिंक येस्टरडे ओनली, yesterday था या day before yesterday, so day before yesterday I had a session of 10 hours, and in those 10 hours we have tried to revise the entire heat transfer. So उन 10 घंटों में हमने जो हीट ट्रांसफर के फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर रहे हैं, और अगर आप अपने 30 ईयर पेपर क्वेश्चंस को कंपेयर करेंगे तो सिर्फ 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सिर्फ 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन तो ये वाला क्वेश्चन है। लेट मी शो यू द क्वेश्चन विच आई शोड यू इन द सेशन ऑफ प्रीवियस सेशन ऑफ प्रीवियस ईयर गेट पेपर्स ऑफ कन्वेक्शन ऑल्सो। तो ये बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन का क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। फिर एक क्वेश्चन और है कि एक स्फेयर है और स्फेयर के अक्रॉस हवा का फ्लो हो रहा है, मगर कौन सा पॉइंट ऐसा है जहां पे हीट कन्वेक्शन कॉफिशिएंट जो है वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। एक ऐसा क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और है जो अभी लेटेस्ट पूछा गया था 2019 में, तो वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सो एक्चुअली क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल होते हैं, हमारे पास जितना टाइम होता है उस हिसाब से हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा एम यही था कि मैक्सिमम पोर्शन कवर अप हो जाए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम अब नियर बाय है, तो आपको एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स कराने से आपको भी दिक्कत आएगा और फिर हमें रिविजन में भी प्रॉब्लम आएगा, हमें बाकी सब्जेक्ट्स कवर अप करने में भी प्रॉब्लम आएगा। सो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी वो 2 पॉइंट्स हम स्किप करेंगे और उन 2 पॉइंट्स के लिए हम सेपरेट सेशन रख लेंगे, क्योंकि उन 2 पॉइंट्स के लिए मुझे कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी बतानी पड़ेंगी। Anyways, so these were the questions which we discussed last time, और आपको कोई भी डाउट हो आप इन बिटवीन मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे ख्याल से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था जहां पे मैं फंस गया था, है ना, जहां मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा था। सो एक मिनट गाइस, एक मिनट। दरअसल ये क्या है, ये जो मेरा टूल है ना, इस टूल में पीछे की स्लाइड्स आ जाती हैं, इस टूल में पीछे की स्लाइड्स आ जाती हैं। हाय दीपांकर, हाँ वो करेंगे डिस्कस। उसके लिए मैंने एक स्पेशल सेशन प्लान किया है। तो मैंने एक मिसलेनियस सेशन प्लान किया है आने वाले 3-4 दिनों में। उसमें जो हमारा कांस्टेंट फ्लक्स कंडीशन होती है उसका जो टेम्परेचर प्रोफाइल बनता है, या कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन होती है उसका जो टेम्परेचर प्रोफाइल बनता है, या फिर इस तरह से फ्लो अक्रॉस अ स्फीयर, इस तरह के जो मिसलेनियस पॉइंट्स है ना, वो 2-2.5 घंटे लगा के हम डिस्कस करेंगे। सो उसके लिए मैंने अलग से एक सेशन रखा है, ठीक है। हाँ, पंप्स भी स्टार्ट होगा। बस अब तेरा कल से 26 तारीख को मेरा एफएम का वो सेशन चलेगा 10 घंटे का। उसके बाद हम पंप्स, डायमेंशनल एनालिसिस और क्या कहते हैं, एक टरबाइन का भी रिवीजन सेशन रखना है। दरअसल मेरे पुराने स्टूडेंट्स का एक आया है मेरे पास, काफी रिक्वेस्ट आया है कि सर एक बार आप टरबाइन दोबारा करवा दीजिए। तो मतलब जो जहां मैं पहले काम करता था तो वहां बहुत सारे सेंटर्स है ना, सो जिन सेंटर्स पे मैंने नहीं पढ़ाया, सो उन लोगों के पास मेरा रिक्वेस्ट आया था मेरे पास। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर उन्हें भी करा देंगे। तो हम पहले डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे, पंप्स पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमने अभी कंप्लीट नहीं किया है। और हमारे जब टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं टरबाइन और कंप्रेसिबल फ्लो का एक रिवीजन सेशन जरूर रखूंगा, ठीक है। अच्छा गाइज, ये एक क्वेश्चन था जहां मैं मिस्टेक कर रहा था। इसका पहला पार्ट सही आ गया था, दूसरे पार्ट में मैं मिस्टेक कर रहा था। सो मेरे को बाद में ध्यान आया कि एक तो मैं रेनॉल्ड्स नंबर का डेसिमल पॉइंट शायद गलत ले रहा था, और दूसरा मैं कैरेक्टरिस्टिक लेंथ गलत ले रहा था। सो मैं भूल ही गया था कि यार हम लोग रेक्टेंगुलर चैनल सॉल्व कर रहे हैं और मैं बार बार कैरेक्टरिस्टिक लेंथ को डायमीटर ले रहा था। सो वो मेरे से मिस्टेक हुई थी शायद। सो आज हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर से विजिट कर लेंगे, ताकि लास्ट टाइम जो मिस्टेक हुआ है मेरे से लास्ट सेशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, उसको हम कवर अप कर सकें, ठीक है। सो दीज क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड आई थिंक, और मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, शायद ये क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। सो हाँ, दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये फ्लो थ्रू पाइप्स का क्वेश्चन है, फोर्स्ड कन्वेक्शन इन फ्लो थ्रू पाइप्स, मगर ये क्वेश्चन स्टेडी स्टेट फ्लो एनर्जी इक्वेशन से डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। तो चल दीपांकर, हो जा शुरू। आज हम ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये डिस्कस करने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं।
तो लास्ट 30 ईयर पेपर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे एक्सेप्ट फॉर वन क्वेश्चन स्फेयर वाला, और इसमें एक क्वेश्चन मैंने अभी टाइप नहीं किया हुआ है, जो मैं क्या करूंगा, मैं ओरली डिक्टेट कर दूंगा, तो वो एक स्पेशल क्वेश्चन है। चलो फिर चालू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं। सो गाइस क्या कहता है वाटर जिसकी स्पेसिफिक हीट है 4.18 किलो जूल पर केजी केल्विन। अगर ये डाटा आपको ना भी दिया हो तो भी आपको याद रखना है, पानी की स्पेसिफिक हीट आप सभी को याद होनी चाहिए। enters a pipe at a rate of 0.01 kg per second, तो रेट दिया हुआ है kg per second, तो ऑब्वियसली मास फ्लो रेट की बात कर रहा है, तो हमारे पास मास फ्लो रेट है 0.01 kg per second एंड अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। तो पानी जो है पाइप में एंटर करता है विद अ मास फ्लो रेट ऑफ 0.01 kg per second एंड टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और कहता है द पाइप ऑफ डायमीटर 30 mm एंड द लेंथ 3 मीटर इज सब्जेक्टेड टू वॉल हीट फ्लक्स QW इन वॉट पर मीटर स्क्वायर। सो वो कह रहा है कि आपके पास एक पाइप लेंथ है, ठीक है, सो मे बी गीजर के अंदर की पाइप है। तो गीजर में क्या होता है, गीजर में पाइप के अराउंड एक इलेक्ट्रिकल कॉइल होती है, तो इलेक्ट्रिकल कॉइल जो हीट जनरेट करती है वो पाइप के सरफेस को सप्लाई होती है, पाइप के आउटर सरफेस को सप्लाई होती है, और फिर पाइप के आउटर सरफेस से अंदर के फ्लूइड में जाती है ना। सो यू आर सप्लाइंग सम हीट फ्लक्स टू द पाइप, तो ये उसी हीट फ्लक्स की बात कर रहे हैं। और अगर आपको ध्यान हो फ्लो थ्रू पाइप्स के केस में दो कंडीशंस होती हैं, एक होता है यूनिफॉर्म हीट फ्लक्स की और एक होता है यूनिफॉर्म टेम्परेचर की। जो अभी मेरे करंट स्टूडेंट्स हैं, सो गाइज मैंने आपको यूनिफॉर्म टेम्परेचर और यूनिफॉर्म कंडीशन के केस में नसल्स नंबर तो बताया था, पर मुझे बाद में ऐसा लगा कि यार अगर हम आधा पौना घंटा और डिस्कशन कर लेते हैं तो वो भी बेटर रहेगा। तो मैं एक शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियो बनाऊंगा, उसको यूट्यूब पे भी डाल दूंगा और आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगा, सो आप लोग भी देख लीजिएगा। अब वो बोलता है इस पाइप का डायामीटर कितना है, पाइप का डायामीटर है 50 mm, दैट इज 0.05 मीटर। तो मैं इसको पहले से ही 0.05 मीटर लिख लेता हूं, 0.05 मीटर, ताकि मेरे को बाद में कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। और फिर वो कहता है कि इस पाइप की जो लेंथ है वो 3 मीटर है, और हमें जो हीट फ्लक्स दिया हुआ है QW वो वॉट पर मीटर स्क्वायर में है। अब जरा देखो वो क्या कहता है, इफ QW इज इक्वल टू 2500x, QW कितना है 2500x है। अब ये 2500x का मतलब क्या है, वो कह रहा है वेयर x इज इन मीटर एंड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो x इक्वल टू 0 एट द इनलेट, what is the bulk mean temperature of water leaving the pipe in degree Celsius। तो कौन बताएगा हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा, सो आई थिंक रेडी इज हेयर। हाय रेडी। सो रेडी, आई एम सॉरी टू स्पीक इन हिंदी, सो आई थिंक सम स्टूडेंट्स आर देयर हु आर इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स, सो नो वरीज, आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन इन इंग्लिश ऑल्सो। सो हु विल टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो रेडी बेटा, इट सेज देयर इज अ पाइप. The pipe has this much diameter and this much length, and this pipe is subjected to heat. So basically there is a pipe. Let me add a slide over here. Other people can think of the method to solve the question. बाकी लोग method सोच सकते हैं question solve करने का. Please be fast and please do not waste your time. जल्दी से बताइए, method solve कीजिए, question solve करके बताइए. So what it says कि there is a pipe and the pipe has a diameter, pipe has a length which is given to us, and they are saying the pipe is subjected to a heat flux. So heat flux means heat transfer rate per unit area, and that heat flux is given to us as 2500 x watt per meter square, and they are saying x means the direction along the flow. So the water enters the pipe at a mass flow rate of 0.1 kg per second, and for the same mass flow rate the temperature is also given, incoming temperature is also given 20 degrees Celsius. So how to find out the exit temperature? क्या find out करना है? What you have to find out? Exit temperature. Very good. So I think Anish has already given us an answer and Dipankar is telling us the method to solve question. Very good, very nice. So let me check whether Anish's answer is correct or not, and whether Dipankar's strategy will work here or not. So what Dipankar is saying? Dipankar is saying, sir, what do you know? You know
how much fluid is coming inside the pipe. So pipe is a control volume, right? So how much fluid is coming inside the pipe and what is the temperature of that fluid? So basically you know how much enthalpy is coming inside the control volume, how much enthalpy is coming inside the pipe. And they are also telling us the heat flux. So heat supplied to the pipe, heat supplied to the control volume. So I think what Dipankar is telling us that for steady state flow, the total energy coming inside is equal to total enthalpy, total energy going outside. This is what he is telling us. So let us try one thing. Let us apply this condition. So what you will say? You will say at inlet, the fluid will come inside with some enthalpy. At inlet, the fluid will come inside with some enthalpy. So you will always write it as enthalpy rate, amount of enthalpy coming inside per unit time. And to the pipe, we are supplying a heat transfer rate, which is given in this form, heat flux form. But simultaneously, the fluid is going outside also. So when the fluid will go outside, the enthalpy will go outside. So you will say the rate at which enthalpy goes outside. Steady state flow energy equation. So I think what you will say the rate at which enthalpy goes outside minus the rate at which enthalpy comes inside is equal to rate of heat supply to the pipe. Now what is this? Enthalpy going out, enthalpy coming inside. So I think for steady state flow, we can also write this as m dot Cp T naught minus Ti, right? So what will happen? This will be equal to Q dot. Now what is this? This is the temperature of outgoing fluid. This is the temperature of incoming fluid. So what you will say? You will say the temperature of outgoing fluid is equal to temperature of incoming fluid plus Q dot by m dot Cp. Yes or no? Please do let me know if this is correct or not. Jaldi se bataiye if this is correct or not. If this method is correct or not. So कौन देख रहा है वीडियो? अनीश देख रहा है. So Sai is watching the video and Dipankar is watching the video. So Sai is saying yes. I think Dipankar and Anish are also saying yes. So we can discuss this, like how this comes into picture. But I think everyone knows this. So I am avoiding it. I am skipping it for now. Now the question is, we have to find out T naught, and for finding out T naught we should know Ti. Do we know Ti? Do we know the inlet temperature? Yes, we know it. Do we know the value of m dot? Yes, we know it. It is 0.1 kg per second. Do we know the value of specific heat at constant pressure? Yes, we know it. 4.18 kilojoule per kg Kelvin. So in this, if somehow you are able to find out capital Q dot, you will be able to find out T naught also. So only one thing is missing which we have to find out, that is capital Q dot. Once we know capital Q dot, we will also know what is the outer temperature of water at outlet. Now let's do one thing. Let us find out capital Q dot then. So who will tell me how to find out capital Q dot? How to find out capital Q dot? कौन बताएगा capital Q dot कैसे find out करेंगे? Who will tell me how to find out capital Q dot? Anyone, please be fast. Anyone, please be fast. जल्दी से बताइए. जल्दी से बताइए. How to find out capital Q dot? Integrate करके. Very good, very nice. Now guys check. What do you mean by heat flux? Multiply by surface area. Very good Anish. बहुत बढ़िया. ठीक है. Good. Now guys check. What do you mean by heat flux? Heat flux means heat transfer rate per unit area. Heat supplied to the pipe surface per unit area. And they are saying this heat flux is a function of x. And I think this is an increasing function of x. So obviously this side will be x equal to 0. This side will be x equal to L. So what will be the value of heat flux at this point? I think it will be 0. What will be the value of heat flux at the other point? I think it will be 2500 L. है ना? So guys, what will happen? I think you can say कि sir, the heat flux value increases from left hand side to right hand side. Heat flux value increases from left hand side to right hand side. And a particular
at a particular distance x, this value is 2500x. At a particular distance x from the left hand side, this value is 2500x. So मैंने पता क्या किया? I have taken a strip of area on the pipe surface. So what will be the thickness of this strip? Dx. What will be this area? What will be this small area? This small area will be, this is a circular strip. So small area will be pi d, that is the circumference, into dx, that is the length of this strip. So this is the area. And how much is the heat flux supplied to this strip? 2500x. So how much is the heat transfer rate to this small strip, to this thin strip? I think heat flux into area, that is 2500x into pi dx. D is the diameter of the pipe. So this is the heat supply rate to a thin strip. Now actually what you have done is you have divided the entire pipe into thin strips, and to every strip you are supplying some heat transfer rate. So what will be the total heat transfer rate? Total heat transfer rate will be the sum of all the heat transfer rates from x equal to 0 to L. है ना? So we will have to integrate this. So let me take another slide. Guys, I am moving on to the next slide. I hope you have done it. I hope you have noted it down. So Dipankar, Anish, Reddy, any good news, any new news for fluid mechanics or heat transfer? Acha, yesterday I came across a video. So NPTEL has launched a new course, and the course is Fluid Mechanics for Astrophysics. Fluid Mechanics for Astrophysics. आप लोग देखते होंगे Big Bang Theory, and in Big Bang Theory there is a guy called as Rajesh Kutrapalli, है ना? So that guy, he was an astrophysics. So use of fluid mechanics for study of सोलर सिस्टम, स्टडी ऑफ यूनिवर्स. तो एक बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है, और अगर आप लोग थर्ड ईयर में हैं तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है. सो आप एक काम कर सकते हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं कि वो कोर्स किसके बारे में. वेल सर, फर्स्ट हाइपरसोनिक विंड टनल हैज बीन डेवलप्ड बाय DRDO इन हैदराबाद, फर्स्ट इंडियन. वाह, आफ्टर USA एंड रशिया. ये तो बहुत बढ़िया चीज है. दिस इज वेरी नाइस, है ना? सो 2500x. और भी कुछ आ रहा था, एक उसकी हाइपरलूप की टेस्टिंग भी हुई है. अभी कुछ इंडिया में भी टेस्टिंग हुई है. वो जो है ना अपना इलियन मस्क, अपना बोल रहा हूं कि मतलब पड़ोसी है अपना, हाँ, उसकी भी टेस्टिंग हुई है कोई. सो 2500x pi d dx from x equal to 0 to L. Thank you Anish, thank you for your kind words. So let us integrate it. Now 2500, that is a constant, pi is a constant, diameter of the pipe, it is a constant, it will also come inside. Integral of x dx, where x varies from 0 to L. Obviously in our case the diameter of the pipe, that is 0.05 meters. So 0.05 meters. In our case the length of the pipe, that is 3 meters, and integral of x dx. So x dx integral, that will be x square by 2. So you will have q dot is equal to 2500 pi into 0.05. I think this decimal and this 00 they will cancel out, and into x square by 2, where x varies from 0 to 3. तो ये बन जाएगा 25 into 5, that is 125. 125 pi into 3 square, that is 9. 9 by 2 minus 0 by 2. I think this is what you are getting. Please check if my answer is correct or not. Please do check. अगर मेरा आंसर करेक्ट है या I have made any mistake, please check. USA in recent year मून पर न्यूक्लियर प्लांट, अरे वो बहुत कुछ करते रहते हैं. कभी चेक करना. स्कंक वर्क्स, क्लेमेंटीन प्रोजेक्ट, आप लोग चेक करोगे ना, हैरान हो जाओगे क्या क्या बातें आती रहती हैं. 125 into pi into 9 divided by 2. So very good. So I am also getting the same answer as Dipankar. 1767.146 watts. So Anish, Reddy, and please check, me and Dipankar both are getting the same answer. Me and Dipankar both are getting the same answer.
So right now, France is developing a new nuclear power plant with help of Indian scientists. तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए. बार्क के जो लोग हैं वो हेल्प आउट कर रहे हैं. Now guys, check. Where do we want to use this heat transfer rate? We want to use this heat transfer rate to predict the outlet temperature of water. So inlet temperature of water plus Q dot upon M dot Cp. So I think what will happen? Inlet temperature of water is 20 degrees Celsius. Heat transfer rate is 1767.146 divided by mass flow rate, which is 0.01, and Cp is 4180. So I think when you are going to solve this, 1767.146 divided by 0.01 and divided by 4180 plus 20. So answer will be 62.276 degree Celsius. 62.276 डिग्री सेल्सियस. तो अनीश का आंसर बिल्कुल करेक्ट है. तो देखा आपने, अनीश हैज गिवन द आंसर सो क्विकली. सो प्रैक्टिस, रिवीजन, that makes you perfect. That not only increases your accuracy but increases your speed also. 0.01 बेटा 0.01 तो मैंने यहाँ मिस्टेक किया, यहाँ गलत लिखा है. 0.01 था, 0.01 kg per second. 0.01 kg per second. Mass flow rate was 0.01 kg per second. Okay. Now guys, same question has two parts, 2 plus 2 marks. तो इसका एक और पार्ट भी है. तो दूसरे पार्ट में ना उन्होंने बस हीट फ्लक्स को चेंज कर दिया है. दे आर सेइंग दैट द हीट फ्लक्स इज 5000. दैट इज अ कांस्टेंट. सो फ्लो थ्रू पाइप्स में हम लोग दो पॉसिबल अप्रोक्सीमेशंस का सॉल्यूशन निकाल पाते हैं. इन फ्लो थ्रू पाइप्स देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, but one of the two possibilities that we are able to solve analytically is that either the heat is supplied uniformly, everywhere the heat flux is same, or the temperature of the surface is constant. The temperature of surface is uniform, but this is a condition of uniform heat flux. This is the condition of uniform heat flux, that everywhere the heat flux is same. So we are supplying a uniform heat flux. It is independent of X. So we are supplying how much heat flux? 5000 watt per meter square. 5000 watt per meter square. Okay. Now it says कि भैया the coefficient of heat transfer, convection heat transfer coefficient at the pipe outlet. So at the outlet side of the pipe, so x equal to 0, x equal to L. So at the outlet side of the pipe, the heat convection coefficient is 1000 watt per meter square Kelvin. So between the surface and the fluid, the coefficient of convection is 1000 watt per meter square Kelvin. And the temperature in degrees Celsius in the inner surface of the pipe at outlet is, the temperature in degrees Celsius at the inner surface of the pipe at outlet. So what is the temperature at inner surface of pipe at outlet side? ठीक है ना? Now guys, please note, let us suppose that surface temperature is Ts. What is surface temperature? Ts. Let me check. Dipankar is saying something. Sir, heat flux constant तो practically तो possible है. वायर बाउंड कर देंगे बट लीनियरली इंक्रीज कैसे होगा? सो दीपांकर, एक्चुअली वो लीनियर इंक्रीज ना जस्ट एक एग्जांपल था, बट केस टू केस वेरी करेगा. जैसे जो कांस्टेंट हीट फ्लक्स है और जो कांस्टेंट टेम्परेचर है, अचीविंग दैट इज पॉसिबल. हाउ? सो इफ यू हैव वायर बाउंडेड अराउंड द पाइप and in the wire everywhere the resistivity is same, so everywhere the electrical resistance is same, so heat produced will be uniform. And how do you achieve constant temperature of the pipe? When condensation or evaporation is going on at the surface of the pipe. तो वो दो conditions achieve करना possible है. ये कंडीशन उन्होंने मे बी किसी एग्जाम्पल को देख के अप्रोक्सीमेशन दे दिया होगा. आप समझ रहे हैं? अब देखना पड़ेगा कि कहां कहां ऐसा हो सकता है. ठीक है. सो पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी हैं, क्योंकि वो पैकिंग डाटा पे भी डिपेंड करेगा. इट विल डिपेंड ऑन योर सराउंडिंग्स ऑल्सो, बट द टू पॉसिबल केसेस दैट वी कैन सॉल्व इज दिस.
Okay, so आगे बढ़ते हैं. Now it is saying how to find out this surface temperature. So guys, what I was saying, let us suppose the surface temperature is Ts. Now you know what happens is, when a cold fluid will move through a pipe, obviously as the fluid will move ahead, its temperature will change. Now for the fluid, you define a mean temperature. So fluid enters the pipe with the mean temperature Ti. Fluid exits the pipe with the mean temperature TO. So when we go ahead, the temperature Ti changes. Now I'm not proving this for now, but what happens is that in case of constant heat flux, Ts is also a function of Sx. Ts is also a function of x. And actually what happens? Ts is such a function of x that the surface temperature towards the inlet side minus the fluid temperature at inlet is equal to surface temperature at the outlet side minus the fluid temperature at outlet. कहने का मतलब, in case of uniform heat flux, if you move ahead, the fluid temperature will change, surface temperature will change, but the difference between the two will remain constant. So suppose if here the difference between the surface and the fluid, that is 10 degrees Celsius, then here also the difference between the surface and the fluid will be 10 degrees Celsius. So if fluid temperature at inlet is 10 degrees Celsius, then surface temperature at outlet surface temperature will be 20, and if the fluid temperature at outlet is 50, surface temperature will be 60. ये आपको ध्यान रखना है, अभी के लिए ये आपको ध्यान रखना है. मैं इसको प्रूव कर सकता हूं, मगर अभी टाइम सेव करने के लिए प्रूव नहीं कर रहा हूं. इन यूनिफॉर्म हीट फ्लक्स, the surface temperature is a function of x, and it is such a function of x that this difference is a constant. This difference is a constant. इसको मैं अभी प्रूव नहीं कर रहा हूं, ठीक है. और ये चीज क्वेश्चन में रिक्वायर्ड भी नहीं है. In fact, this is not required in the question. Now guys, let us try how to find out the outlet, how to find out the surface temperature. Guys, I think heat flux is given to you. So whatever heat flux you've supplied to the pipe, at steady state, this heat will go into the fluid by convection. So I think if I use the Newton's recommend law of cooling, I will directly say the heat convection rate, heat flux, convection flux between the surface and the fluid, that is the coefficient of convection into the surface temperature of the pipe, inner surface temperature of pipe minus fluid temperature. Now we are talking of outlet point. So surface temperature of pipe at outlet, fluid temperature of pipe at outlet. So I think what will happen? I think from this equation you can write down the surface temperature of pipe at outlet is equal to T outlet fluid temperature at outlet divided by plus Q dot by H. I hope मैं सही कर रहा हूँ. कहने का मतलब, in this equation, if I get the value of outlet temperature of fluid, if I get the value of heat flux, if I get the value of coefficient of convection, I will be able to find out the surface temperature of pipe also. Am I correct or not? Please do let me know. Am I correct or not? And actually Q dot is given to us. What is Q dot? Everywhere the heat flux is constant, same. Everywhere the heat flux is same. That heat flux is 5000 watt per meter square Kelvin. What is the coefficient of convection? 1000 watt per meter square Kelvin. So I think to find out the surface temperature at outlet, we only need the fluid temperature at outlet and we will add a 5 in it. We will get our answer. I hope I am saying correctly. I am doing correctly. So दीपांकर तो yes कह रहा है. I hope बाकी लोग भी इसको confirm करते हैं. So ready, Anish, what do you think? Am I correct? Am I correct? Or have I made any mistake? Have I made any mistake? Okay, very good. Very good. So first of all, let us try some method to find out the outlet temperature of fluid. Now guys, just have a look at the data given to us. So data says the fluid comes inside with a mass flow rate of 0.01 kg per second. The fluid comes inside with a temperature of 20 degrees Celsius.
So water, and for the water, specific heat at constant pressure is 4.18 kilojoule per kg Kelvin. So I think this is the indicative of how much enthalpy comes inside per unit time. And I think it is also given us what is the heat supply rate to the pipe. So again the heat supply rate, now this time it is a constant, everywhere it is 5000 watt per meter square. So if we multiply this heat flux by the area of the pipe, we will get the total heat transfer rate. Now enthalpy is coming inside, heat is coming inside, and from here the enthalpy is going outside. I think what you will say, enthalpy coming inside, the rate at which enthalpy comes inside plus the rate of heat supply is equal to rate of enthalpy going outside by steady state flow energy equation. So I think H dot O minus H dot I is equal to Q dot is equal to Q dot. So Q dot is equal to M dot Cp T naught minus Ti, or you can say T naught is equal to Ti plus Q dot by M dot Cp. बिल्कुल वैसे ही जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसके फर्स्ट क्वेश्चन में किया था. In the same manner like we have done in the first question. Now I hope you have noted it down. Let me go to the other slide. Note कर लीजिए फटाफट. Please note it fast. So Dipankar is waiting for other chapters of fluid mechanics, dimensional analysis, pumps, है ना. So बस अब इस हफ्ते हम स्टार्ट कर देंगे. तो 26 तारीख को मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा. सो मैंने प्लान यही बनाया कि हम ना पर्टिकुलरली 2-3 चैप्टर्स ऐसे हैं. सो 26 तारीख को ना एक रिवीजन सेशन है ऑन 26. सो रेडी फॉर योर इंफॉर्मेशन ऑल्सो, ऑन 26 December I have a revision session of fluid mechanics. And you guys also know that fluid mechanics is a very big subject. Now what is my agenda? My agenda is to write notes by hand, because that becomes the best revision when you revise while writing. So we will make notes, but since this is a big subject and based on the speed during the session of heat transfer, I was able to realize that in fluid mechanics we will be able to cover the first 6-7 chapters. And for remaining 2-3 chapters, even the previous year questions are pending. So my aim will be that first of all I will cover the 6-7 chapters on 26th, and for remaining chapters we will have revision session also, and same day previous year questions also. Writing while revision makes wonders. Very nice. So we will make short notes on that day. So Ti is 20 degrees Celsius. Guys, let's come back to the question. So this is the formula of outlet temperature of fluid. Now to find out outlet temperature, let us put the inlet temperature Ti 20 degrees Celsius. Let us put the mass flow rate 0.01. Let us put the specific heat at constant pressure 4180. How to find out the total heat transfer rate? Bhaiya, heat flux is uniform. It is 5000 watt per meter square. So what will be the surface area of the pipe to which we are supplying this heat flux? I think pi dl. So pi into d, which is 0.05 into L, which is 3 meters. Let me confirm these values. So let me confirm these values. Yes, 0.05 meters is the diameter and 3 meter is the length. So what will happen? Let us solve this. Kindly get an answer. Please. Please get an answer. Dipankar का answer already आ गया है. Very good. So I think this decimal and this decimal will cancel out. This 0 and 0 will also cancel out. So you will have 500 into 50, that is 25,000 into pi into 3 divided by 418. तो कुछ गड़बड़ आया क्या? 5000 pi dl. 5000 pi dl 4180. So I am getting 20 plus 56.368, that is 76.368. So this is the
surface temperature of outlet temperature of the fluid. So what will be the surface temperature at outlet? It is the fluid temperature plus 5 degrees Celsius. So this will become 81.368 degree Celsius. So let us check our options. So 81.368 डिग्री सेल्सियस. तो आप देखो आपको 76 भी दिया हुआ है, तो अगर आप 76 मार्क कर देते तो आपका आंसर गलत हो जाता 81 डिग्री सेल्सियस. 81 डिग्री सेल्सियस. ओके. सो गाइस, एनी डाउट? अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं. अदरवाइज इफ देयर इज अ डाउट, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन वंस एंड लेट मी नो. आई विल कवर इट अप. जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन वंस अगेन. आई विल कवर योर डाउट. एक बार दोबारा से देख लो, क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो मैं बता देता हूं. अदरवाइज रीड दिस क्वेश्चन, एल्स यू कैन रीड दिस क्वेश्चन. So I think there is a portion of the question which is hidden behind me. So let me write over here. So the Nusselt number Nu is equal to heat flux Q double dot L by K TW minus T infinite is equal to. So वो जो portion है which is hidden behind me, that I have written over here. So this portion I have written over here. हाँ दीपांकर बेटा, एक्चुअली फुली डेवलप फ्लो का मतलब ही यही होता है. हम तो फुली डेवलप फ्लो सॉल्व करते हैं ना. तो जैसे हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर में क्या होता है, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर में फुली डेवलप फ्लो का मतलब होता है एक तो वेलोसिटी प्रोफाइल की शेप कांस्टेंट है और एक वॉल शियर स्ट्रेस कांस्टेंट है. यहाँ पे टेम्परेचर प्रोफाइल कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे जैसे फ्लूइड आगे बढ़ेगा, फ्लूइड या तो हीट अप होता जाएगा या ठंडा होता जाएगा. यहाँ पे एक डायमेंशनलेस टर्म आती है, वो कांस्टेंट होती है और एच कांस्टेंट होता है. सो ये कंडीशन है. ठीक है. इनफैक्ट फॉर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑल्सो डायमेंशनलेस टेम्परेचर एंड एच बोथ आर कांस्टेंट्स. इस तरीके से रहता है. Okay, so guys, let's read the question. Let us read the question. 2014 set 1, 2 marks. So it says the non-dimensional fluid temperature profile. So I hope if you will see this formula, the formula says T, that is the temperature at the point. The formula says TW, that is the wall temperature or surface temperature. The formula says T infinite, that is the fluid temperature. So what they have done, actually they have represented the temperature in dimensionless form. Which form? Dimensionless form. Check the numerator, degree Celsius, denominator, degree Celsius. So this is the way of representing temperature in dimensionless form. Now they are saying the non-dimensional, that is the dimensionless temperature profile near the surface of a convectively cooled flat plate. So there is some flat plate, and the flat plate is getting cooled by convection. So at a particular section, this is the temperature profile, this one, where y is the distance measured perpendicular to the plate. So I think what they are saying, that if you will take a point which is y distance away from the solid surface, so at the point temperature is this much. L is the length of the plate, A, B, C and arbitrary constants. TW is the wall temperature, surface temperature, and T infinite is the ambient temperature. I hope everyone remembers ambient temperature means the temperature of far away fluid. And they are asking you, if the thermal conductivity of the fluid is K, heat flux is Q double dot, what will be the Nusselt's number? What is Nusselt's number equal to? So कौन बताएगा how to solve this? Please do let me know. Option B. Arey wow, very good Anish. Anish, very good beta, very nice. 2 marks to you. So how to solve this? Dipankar, ready? Anyone who is watching the video, please do let me know how to solve this question. Don't worry, take your time. But try to identify how to solve this question.
I will remove the extra stuff ताकि आप लोग confuse ना हो जाए. And since Anish's answer is correct, let me give him the second question also. He can try the other question. तब तक है ना, so उसको दूसरा question दिखा देते हैं. Anish बेटा तब तक ये वाला question try कर ले, तब तक ये वाला question try कर ले. Kindly try this question till then. So guys, मेरे यहाँ पे वीडियो हैंग हो गया था. सही चल रहा है, सही चल रहा है. हाँ. So Anish, till then you can try this question. Anish, till then you can try this question. Take a photo of it and I think you will quickly do it. इसका फोटो ले लो, स्नैपशॉट ले लो फटाफट, ताकि मैं पिछले क्वेश्चन पे वापस जाऊं. ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई करो. ये दो क्वेश्चन ट्राई करो, तब तक हम बाकी क्वेश्चन करते हैं. दीपांकर, हाँ बेटा तू भी कर ले, तब तक तू भी ये दोनों क्वेश्चन ट्राई कर ले और मैं वही क्वेश्चन कंटिन्यू करता हूं. ओके, सो गाइस टिल देन दे आर डूइंग अदर क्वेश्चन. लेट अस सी आवर क्वेश्चन. So actually their approach is correct. So I thought why to waste their time, है ना? They can go through the remaining two questions. So first of all, please note, Nusselt's number is equal to heat flux by wall temperature minus fluid temperature into L by K. Just have a look at this. Just have a look at this. Nusselt's number, I think जब हम Nusselt's number की definition लिखते हैं, when we write down the mathematical definition of Nusselt's number, it is nothing but HLC by K, right? है ना? Nusselt's number is always HLC by K, characteristic length, and it is also equal to minus del T by del Y at Y equal to 0 divided by Ts minus T infinite upon characteristic length. It is also equal to this. Correct na? So what is this? You will tell me that, sir, when we talk of the flat plate, when we talk of any surface, the layer of fluid which is in direct contact with the surface, this is always at rest. So whether it is free convection or forced convection, the heat transfer across this layer is by conduction, and the heat transfer through remaining mass of fluid is by bulk motion. So we can also say the heat transfer from the surface to the fluid, that is H Ts minus T infinite. Convection from the surface to the fluid is first of all conducted from the layer of fluid which is in direct contact with the surface. So क्या होता है कि जो सरफेस और फ्लूइड के बीच में कन्वेक्शन है, द कन्वेक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द फ्लूइड इज फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्टेड. इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्टेड थ्रू द लेयर ऑफ फ्लूइड विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, है ना? तो ये टेम्परेचर ग्रेडियंट उस लेयर का ग्रेडियंट है. दैट इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ द लेयर. नाउ हैव अ लुक एट दिस फॉर्मूला. व्हाट इज दिस? Q dot by Ts minus T infinite. What is this equal to? Coefficient of convection only. And have a look at the formula of the question. So in the question it is written Nusselt's number is equal to Q dot Ts minus T infinite into L by K. This is what they are writing in the formula. So you know what they are suggesting. They are suggesting this is the coefficient of convection, this is the characteristic length, and obviously this is the thermal conductivity of the fluid, which is also mentioned in the question. ये आपको suggest कर रहे हैं. So आपको बस coefficient of convection find out करना है. You will get your answer. You only need to find out your coefficient of convection. You will get your answer. Now you will ask me, sir, how do we find out coefficient of convection? So using the same condition that the heat convection from the plate is first of all conducted through the layer of fluid in direct contact, the formula for coefficient of convection is minus K del T by del Y at Y equal to 0 divided by surface temperature, that is wall temperature minus fluid temperature, है ना? So I think I have already told you many times, if you know the Nusselt's number, you can find out coefficient of convection. If you know the temperature profile, then also you can find out the coefficient of convection. So here what we will do, firstly we will use the temperature profile to find out coefficient of convection. We will put the coefficient of convection in Nusselt's number and we will get our Nusselt's number. Now it is given to us that
wall temperature minus temperature at a point upon wall temperature minus fluid temperature, that is equal to how much? That is equal to A plus By by L, A plus By by L plus Cy by L whole square, है ना? Now let us take a derivative of this. I will do del T by del Y. So I think when I will do del T by del Y, the denominator is a constant, because whatever may be the Y value, Y means the distance of point from the surface. Whatever may be the Y value, wall temperature means surface temperature, which is a constant. T infinite means fluid temperature. And the numerator, so derivative of tau TW, that will become 0. And here you will have minus del T by del Y. Minus del T by del Y. I hope I am doing it correctly. Minus del T by del Y. Now, if you have taken the derivative on left hand side, then you will also take the derivative on right hand side. So A is a constant, derivative will be 0. Y, power of Y is 1. So derivative will become 1. So this will be B by L. Power of Y is 2, y square, so derivative will become 2cy, but in the denominator there is an L square also. Now guys, please note, to find out the value of h, I need to substitute y equal to 0 in this derivative. इसमें हमें y equal to 0 put करना पड़ेगा. So once you will substitute 0 in y, you will substitute y as 0, this term will become 0. So what will happen? You will have minus del T by del Y at y equal to 0 divided by wall temperature minus fluid temperature equal to B by L. So this value is B by L. So this negative del T by del Y at y equal to 0, TW minus T infinite is B by L. So I think we have already found out this value along with the negative. So based on this, your H value will be equal to KB by L. Nusselt's heat flux upon temperature difference, that is KB by L. Please note it fast. Please note it fast so that I can substitute this value. Please note it fast so that I can substitute this value. Anish, Dipankar, beta, वो दो क्वेश्चन हो गए. सिंपल क्वेश्चन थे, आई थिंक बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं थे. वो दो क्वेश्चन हो गए. प्लीज डू लेट मी नो. दो क्वेश्चन हो गए वो. प्लीज डू लेट मी नो. सो मुझे ना एक बहुत अच्छा वेब पेज वो यूट्यूब पे क्या कहते हैं, अभी थोड़े दिन पहले एक तो दीपांकर को चैनल बताया था. सो आई फाउंड आउट सम यूट्यूब चैनल्स. सो देयर इज अ वेरी गुड चैनल कॉल्ड एज एजेंट JZ. Agent JZ. So this guy, I think he works in some company. So मैंने एक आध वीडियो देखा था. So he works in some company and he puts a lot of extremely good videos on turbines and stuff. बहुत बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिकल नॉलेज वाला वीडियोस बनाता है. So आप देख सकते हो. दीपांकर, the name is Agent JZ. Agent JZ. So guys, we have found out this value. We have found out this coefficient of convection. It is BK by L. How much it is? BK by L. So coefficient of convection is BK by L, but coefficient of convection is multiplied by L by K. So this will cancel out, L will cancel out, K will cancel out. So your final answer will be B. So our Nusselt's number is equal to B. So when you talk of your answer, your coefficient of convection will become, so just a second guys, just a second. Coefficient of convection will become B. So our answer is option number B. So ready, please check if this is correct or not. Ready, please check if this is correct or not. Please check if the answer is correct or not, and please ask if there is a doubt. Please ask if there is a doubt. So Anish, बेटा इसका फोटो लो, ये दोनों क्वेश्चन का फोटो लो और कवर अप कर लो, ठीक है? So मैं नहीं चाहता कि खाली बैठे, ठीक है ना? तेरा टाइम वेस्ट क्यों करना है अगर तेरे को आता है? So those who have done the question already, the next two questions also they can take more photos and they can start solving. No need to waste time in the questions which you already know.
So let's move ahead. देखो क्वेश्चंस रिवाइज करने का फायदा जरूर होता है. Definitely there is importance of finding out revising the questions because your speed will increase. But right now you have already solved the question and I know that the method is very simple. So मेरे बताने से आपको कुछ अलग चीज नहीं पता लगने वाली है. So your momentum is maintained. So you keep on solving the questions. Now guys check. So from next time onwards I will try that. Already there is a link of the PPT. We will share the PPT. आप PPT से क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए. जो मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं वो मेरे साथ कंटिन्यू करें और जो आगे बढ़ रहे हैं वो आगे बढ़ें. सो आई विल ट्राई कि कुछ ऐसा हो जाए. अच्छा साथ साथ कर रहे हो. ओके ठीक है. सो गाइज लेट्स चेक. फॉर लेमिनार फोर्स्ड कन्वेक्शन ओवर अ फ्लैट प्लेट. So there is a flat plate and there is forced convection and the boundary layer is laminar. If the free stream velocity increases by a factor of 2, what will happen to the average heat transfer coefficient? So guys, I always tell you that there are a few formulas of convection which you should remember. So one of those formulas is forced convection of over a flat plate and not the turbulent formula for the laminar boundary layer. So for laminar boundary layer, very good Anish, बिल्कुल सही है बेटा, totally correct, very good. So for laminar boundary layer, if I take a cross section at a distance x, so for this cross section, the local Nusselt's number is given as 0.332 into the local Reynolds number raised to power 1 by 2 into Prandtl number raised to power 1 by 3. Anish, I hope I am saying it correctly. I am telling it correctly. इस point पे जो Nusselt's number आता है, that Nusselt's number is given like this. This is the local Nusselt number. This is the local Nusselt number. And correspondingly, you can also write the local coefficient of convection also. So for the same point, if you write the local coefficient of convection, that local coefficient of convection will be 0.332 into K by X into local Reynolds number raised to power 1 by 2, Prandtl number raised to power 1 by 3. ठीक है, दीपांकर कहाँ पहुंचा बेटा, क्या कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन कर रहा है? Now, what is the difference? So, Nusselt's number multiplied by K divided by characteristic length. So, local coefficient of convection. Why I am calling these local Nusselt number, local coefficient of convection? Because these are the quantities for this particular point. For this particular point. But I want to write down the average quantity. Whenever I want to calculate heat transfer rate for the entire plate, I want the average quantity. What is the average quantity? The average quantity H bar. That average quantity is 0.664 into K by L into Reynolds number at the leading edge under root into Prandtl number cube root. I think this is the correct formula, है ना? And similarly, if you will write down the average Nusselt number, that is for the complete plate, it will be 0.664 Reynolds number L under root Prandtl number raised to power 1 by 3. Now, apart from this, you should know the Nusselt's number for flow through pipes. Constant temperature condition, that is 3.66. Nusselt's number for flow through pipes. Uniform heat flux condition, that is 4.36. And all these values, even this formula is written for, this is written for what? This is written for laminar boundary layer. Then you should remember the formula, not the entire formula, only this thing, that for in most of the cases for natural convection, the Nusselt's number is written as a constant into Rayleigh's number raised to power 1 by n. Now, when we talk of Rayleigh's number, it is Grashof number into Prandtl number. And if you have laminar flow, n value is equal to 4. And if you have turbulent flow, n value is equal to 3. So these things, if you can remember, that would be good. That would be good. Okay? Now guys, check.
Now, based on this, if I consider the coefficient of convection, so they are asking coefficient of convection for the plate. So have a look what they are saying. They are saying for laminar forced convection over a flat plate, if the free stream velocity increases by a factor of 2, then what will happen to the average heat transfer coefficient? If the free stream velocity increases by 2, then what will happen to the average heat transfer coefficient? I think when I talk of H bar, so first of all, H bar is proportional to thermal conductivity. It is inversely proportional to total length of the plate. It is proportional to under root of Reynolds number for the leading edge, and it is proportional to cube root of Prandtl number. Now Prandtl number is a property of fluid, that is mu C by K, and Reynolds number is rho U naught K by rho U naught L by mu. So Reynolds number means velocity power 1. So H bar is proportional to free stream velocity under root. So when the free stream velocity is U2, your H bar will be H2, and when free stream velocity is U1, your H bar will be H1, right? So I think what you can say, you can directly say in the question, they are asking what will happen to the average heat transfer coefficient. So you can say H2 bar by H1 bar is equal to U2 under root by U1 under root. Now they are saying the free stream velocity gets doubled. So I think H2 bar by H1 bar, that will be equal to under root of 2. So your heat transfer coefficient will become root 2 times. Heat transfer coefficient will increase by root 2 times. It will rise by a factor of root 2. So guys, I hope जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, I hope this is correct, and please do let me know अगर मेरे से कोई भी मिस्टेक हुआ तो जल्दी से चेक कर लो, ठीक है? अनीश, दीपांकर कहाँ चला गया बेटा? क्वेश्चन सॉल्व कर लिए सारे? प्लीज डू लेट मी नो, एक बार बता दे मुझे, एंड अदर्स ऑल्सो, रेडी ऑल्सो, जल्दी से बता दीजिए, सो प्लीज डू लेट मी नो. अच्छा दीपांकर बेटा, एक ना मेरे को ना याद नहीं है, शायद तो उस दिन अवेलेबल नहीं था. मैंने एक आई हैड शेयर्ड फॉर अदर्स ऑल्सो, आई हैव शेयर्ड अ फाइल. In that file there are some 40-50 questions of thermal radiation, and those questions cover the entire thing. They cover everything. They are beyond what is required for GATE exam. So if you do not have that link, you just tell me. So today in the class मैं आपको वो link देख के दे देता हूँ. So it's a bit.ly link. You can directly click it and download it. And there were some notes made by one of my students. So 1.5 years back in Coimbatore. So he sent me those notes once he got selected, and these are class notes only. So those notes also I can share you. Actually I do not have my own notes. मैं notes नहीं बनाए हुए हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है मेरे साथ. तो मैं स्टूडेंट वाले नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा. हाँ, सो अनिश आई विल डू. मेरे को ना एक बार देखना पड़ेगा, बिटली पे जाके देखना पड़ेगा लिंक क्या है. तो 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं. टिल देन आई विल गेट द लिंक. नाउ गाइस चेक. Water flows through a tube of diameter 25 mm at an average velocity of 1 meter per second. So there is a tube, and through the tube water flows with a velocity of average velocity of mean flow velocity of 1 meter per second, and the diameter of the tube is 0.025 meter. Now they are saying the properties of water are 1000 kg per meter cube, dynamic viscosity is this much, thermal conductivity is this much, and Prandtl number is also given. So no need to find out Prandtl number. And they are saying Nusselt's number is this. Array actually मतलब whenever this powers come ना, this power comes from turbulent flow. ये turbulent flow की power है. If the Reynolds number is 0.8 and Prandtl number is 0.4, generally this is turbulent flow. So turbulent flow is going on over here. और मेरे ख्याल से you can also check using the Reynolds number. So check करके देखना कि Reynolds number कितना आ रहा है. But they are asking you the convective heat transfer coefficient. I hope you remember, to find out convective heat transfer coefficient there are 2 methodologies. Either you know the temperature profile, then you can use the definition, the heat convection between the surface and fluid, that is H Ts minus T infinite
is nothing but the heat conduction through the layer of fluid which is adjacent to the solid surface. तो एक तो आप ये definition use कर सकते हैं, but हमें भी पता है finding out the temperature profile is very difficult. So generally we do experiments and we find out the dimensionless number, that is Nusselt's number. So once you know the Nusselt's number, then also you can predict the value of H, है ना? So ये आपके पास H का formula होता है. So I think Nusselt's number is given to us in the question. Only thing is we need to find out the Reynolds number. We need to find out the Prandtl number. Prandtl number is also given 4.85. So let us solve it. Let us get the Nusselt's number. So for us, Nusselt's number is equal to 0.023, Reynolds number raised to power 0.8, Prandtl number raised to power 0.4. So let me get the Reynolds number. So I think Reynolds number is written as rho ud by mu when we are talking of flow through pipes or flow through tubes. So let us take the values. So कितना वैल्यू था? For density 1000 kg per meter cube, dynamic viscosity 7.25 into 10 raised to power minus 4. 1000 kg per meter cube, 7.25 into 10 raised to power minus 4, which will come in the denominator. 7.25 into 10 raised to power minus 4, and I think this flow velocity is 1 meter per second and diameter is 25 mm. So 1 meter per second and 25 mm, that is 0.025 meters. So let us check 1000 into 0.025 divided by 7.25 and 10 raised to power 4 will go up. So this will become 3.4485 into 10 raised to power 4. So this is your Reynolds number. Now guys, please note, मैं बोल रहा था, if the flow is turbulent, then we use this formula. Is the flow turbulent? Because कई बार मैंने बताया है, if Reynolds number is greater than 5.5 lakh, then the flow is turbulent. मैंने कई बार ऐसा बताया है, कई बार ऐसा भी बताया मैंने, है ना? I tell many times, when Reynolds number is less than 2 lakh, the flow is laminar, and when Reynolds number is more than 5.5 lakh, the flow is turbulent. यहाँ पे तो laminar flow दिखाई दे रहा है यार. I think this is laminar flow. Is that so? No, sir. These are the values for flow over flat plates, not for internal flows, not for flow through pipes. For flow through pipes, the critical Reynolds number is 2300 and 4000. ठीक है ना? ये चीज आपको ध्यान रखनी है. ये values जो हैं flow over flat plate के लिए हैं, and these values are for flow through pipes. Now definitely this value is like 34,000, much greater than 4,000. So this is a turbulent flow. So that formula is given for turbulent flow. So you know guys, have a look at Dipankar's answer. Dipankar पता है क्या बोल रहा है? सर इसमें भी laminar flow achieve किया जा सकता है. Actually, the experiments that were done by Reynolds, that were based on certain degree of roughness and certain vibration in the system. अगर आप सिस्टम में सारी वाइब्रेशन को एलिमिनेट कर दें, and if you make the surface very smooth, then you can achieve Reynolds number in this case also at very high values. So till now, people have been able to achieve a laminar flow up to a Reynolds number of 1 lakh. ये experimentally achieved value है. अब तक 1 lakh Reynolds number तक for flow through pipes, laminar flow has been achieved. So earlier the record was 50,000. Now it has become 1 lakh. So 1 lakh value तक achieve हो चुका है. ठीक है? So हाँ, वो ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग तो मेजरली क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं? हम लोग मेजरली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं पाइप्स इन अ बिल्डिंग, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ बिल्डिंग, है ना? और मे बी पाइप्स इन अ पावर प्लांट, पाइप्स इन अ एयर कंडीशनर. तो उसमें ये वैल्यूज जो है प्रैक्टिकली चलती हैं. हालांकि एयर कंडीशनर में नहीं चलती है. एयर कंडीशनर में वाइब्रेशन कंपैरेटिवली ज्यादा होती है. तो कुछ बेसिक जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबिलिटीज हैं उनके अकॉर्डिंगली डिसाइड किया गया दीपांकर. सो जनरल सरफेस रफनेसेस होती हैं उनके अकॉर्डिंगली बताया गया ये.
ठीक है ना। देख मैंने पहले ही बताया फ्लूइड मैकेनिक्स में हर जगह एक्सपेरिमेंट से काम चलता है, तो जितने भी फ्रिक्शन फैक्टर्स होते हैं वो भी कभी कांस्टेंट नहीं होते, वो भी हमेशा एक्सपेरिमेंट से ही आते हैं। वो भी कभी आप 16 बाय रेनॉल्ड्स नंबर यूज नहीं करते क्योंकि लेमिनार फ्लो अचीव ही नहीं हो पाता। समझ रहे हो ना आप, ये सब एक्सपेरिमेंटल है और केस टू केस वेरी करता है। आओ आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना क्या निकाल रहे थे, नसल्स नंबर फाइंड आउट कर रहे थे। वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट नसल्स नंबर। सो व्हेन यू टॉक ऑफ नसल्स नंबर, when you talk of Nusselt's number, let me take one more slide. When you talk of Nusselt's number, it is 0.023 into Reynolds number raised to power. So how much is the Reynolds number? Reynolds number is this much, 34,485. Reynolds number is 34,485 raised to power 0.8. And how much is the Prandtl number? So Prandtl number is 4.85, correctly given for water, 4.85 raised to power 0.4. So once you solve this, you will get your answer. And I think Anish is getting correct answer. बिल्कुल correct answer आ रहा है। मैं भी एक बार solve करके देख लेता हूँ। 34485. So exponential. So this thing will become 4266.81 into 0.023 into 0.4 natural log of 4.85, 0.4 natural log of 4.85 and exponential. So this is 1.88. So 1.88 into 4266.81 into 0.023. So here I am getting a Nusselt's number of 184.55. So 184.55. दीपांकर बस एक मिनट बेटा, बस एक मिनट. Now coefficient of convection, that is Nusselt's number into K by LC. So Nusselt's number will be 184.55 into thermal conductivity. So thermal conductivity 0.625, very correctly given. So 0.623 के करीब होती है. So 0.625 upon diameter of the pipe. So in flow through pipes, the characteristic length is the diameter. How much is the diameter of the pipe? 25 mm. So you will have 0.025. So let us solve. अनीश बेटा बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आपने देखा है मैं कितना कैलकुलेशन मिस्टेक करता हूं. वो तभी होता है जब दिमाग भटका रहे. अगर दिमाग एक चीज पे फोकस हो ना तो कभी भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा. और अगर आप थर्ड ईयर में हो तो आप इस चीज पे बहुत आसानी से काम कर सकते हो. पता है कैसे? मैंने क्या किया था, मैं तो बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक करता हूं और जब चीजें हद के पार हो जाती है ना तो मैं क्या करता हूं, मैं थोड़े दिन का ब्रेक ले लेता हूं और एक हफ्ता हर क्वेश्चन में मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि आराम से सॉल्व करूंगा मगर आंसर पहली बार में निकालूंगा, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करूंगा. और एक हफ्ता हैबिट बनाता हूं तो वो अपने आप 3-4 महीने चल जाती है. ऐसा होता है. तो आप भी करके देखना. जब भी लगे ना कि आउट ऑफ फोकस जा रहे हैं और कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, वो इसलिए होते हैं क्योंकि ना हम हड़बड़ी में होते हैं, जल्दी जल्दी आंसर निकालना है. मगर मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप स्लो स्पीड पे जब टर्न लेना सीख जाते हैं उसके बाद धीरे धीरे फास्ट स्पीड पे भी टर्न ले लेते हैं. समझ रहे हैं ना? तो पहले स्लो स्पीड पे एक्यूरेसी बनाओ, फास्ट स्पीड पे भी एक्यूरेसी आ जाएगी. अच्छा सर मैंने एक डाउट है, नेचुरल कन्वेक्शन में बहुत टाइम से सर नॉन स्लिप टू नेचुरल कन्वेक्शन में भी वैलिड है, तो सर जो नॉन स्लिप लेयर है वो तो भी स्टिक रहेगा एंड इट्स टेम्परेचर विल जस्ट इंक्रीज. नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. सो दीपांकर पता क्या होता है बेटा, मान लो ये वर्टिकल फ्लैट प्लेट है, ठीक है. अब यहां पे तो आपकी नो स्लिप कंडीशन बनेगी, मगर जब हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट है तब नहीं होगा बेटा. क्यों? क्योंकि अब तो बाउंड्री, अब तो ब्यूएंट फोर्स के कारण ये ऊपर उठेगा. अब इस पे विस्कस फोर्स लगाने वाला कौन है? कोई भी नहीं है विस्कस फोर्स लगाने वाला. मगर ये वो पॉइंट है जहां से फ्लूइड ने मूव करना स्टार्ट किया था. तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है. तो ये डिफरेंस आता है. सो यहां भी फ्लो वेलोसिटी 0 है नो स्लिप कंडीशन के कारण बिकॉज ऑफ विस्कस फोर्स, और यहां पे फ्लो वेलोसिटी 0 है बिकॉज दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द फ्लूइड विल स्टार्ट मूविंग. आई होप आई एम करेक्ट. सही बोल रहा हूं मैं शायद, ठीक है ना?
Is that correct? Please do let me know. I hope आपका यही doubt है. बाकी in real life you cannot have a fluid without vertical surfaces also. ये भी चीज है, तो यहाँ पे इनका भी boundary layer formation होगा, मगर अगर ignore कर दो तो ये चीज आती है. चलो फिर. So I think Anish answer, my answer, Dipankar answer, we are all giving the same answer. So let's move ahead to the next question. What is the answer of this question? इस question का answer बताओ फटाफट. Please do let me know what is the answer of this question. Please do let me know what is the answer of this question. Option D. So Dipankar, Anish option D कह रहा है. क्या कहना है? Reddy. If Reddy is watching the video, it will not form at all. So guys, first of all, please have a look. For flow of viscous fluid over a flat plate, if the fluid temperature is same as the surface temperature, the thermal boundary layer is thinner than velocity boundary layer, thicker than velocity boundary layer, of the same thickness as velocity boundary layer. I think ये thinner कब होती है? जब Prandtl number greater than 1 होता है. I think when Prandtl number is greater than 1, thermal boundary layer is thinner than velocity boundary layer, which happens in case of oils, है ना? When Prandtl number is much less than 1, in that case, that is liquid metals, thermal boundary layer is greater than velocity boundary layer. And when Prandtl number is equal to 1, which happens for a lot of gases, this is the situation. But bhaiya, thermal boundary layer means temperature as a function of Y, which happens because of heat exchange. Here the temperature values are same, so there will be no heat exchange, there will be no temperature profile. So here thermal boundary will not be formed. Very good, very nice. बिल्कुल सही है, ठीक है ना? But ISR, but is 0 less than any positive number 2? Is 0 less than any positive number 2? दीपांकर बेटा दोबारा बोलना समझ नहीं आया. मतलब शायद आप बोल रहे हो कि Prandtl नंबर नेगेटिव हो. Is 0 less than any positive number 2? समझ नहीं आया ये चीज. Okay, now let next question. So actually this term came in another question also. Let's check. So when we were solving these questions, this one. So in this question, we were using a term mean temperature of the fluid. Bulk mean temperature of the fluid. Kindly have a look at the blue color. On the right hand side, bulk mean temperature of the water. Bulk mean temperature of the water. Now the same question, the question is based on this term, bulk mean temperature. तो पहले तो कौन बताएगा what is bulk mean temperature? नहीं, दीपांकर बताना बेटा क्या लिखा है? But is 0 less than any positive number 2? Is 0. बेटा बताना क्या पूछ रहा था? Okay, so guys, anyone would like to tell what is the meaning of bulk mean temperature? Would anyone like to tell what is the meaning of bulk mean temperature? Please do let me know what is the meaning of bulk mean temperature. What is the meaning of bulk mean temperature? What is the meaning of bulk mean temperature? Please do let me know. Please check. अच्छा, thinner. हाँ ठीक है. Okay, so Anish is giving an answer. Anish, very good. So I think Dipankar सही कह रहा है ना? So Anish is saying correctly. You know guys what Anish is saying? Anish is saying कि sir, when we say bulk mean temperature, actually what happens? Let me take a slide first, then we will read the question. Firstly, let us understand the meaning of bulk mean temperature, then we will solve the question. So guys, what will happen? Let us suppose water enters the pipe
with a uniform temperature of T1 maybe, Ti, okay, with a uniform temperature of Ti. And this pipe is maintained hot at a surface temperature of Ts. So as soon the water will come in contact with the pipe surface, this layer will achieve no slip condition and the temperature of this layer will become Ts. Now this layer will heat the second layer, so its temperature will change. Second layer will heat the third layer, temperature will change, and so on. है ना? Now let me take some random values. Say for example, this temperature is 20 degrees Celsius and this temperature is 90 degrees Celsius. So you know what will happen? Here the temperature will be 90, here the temperature will be 60, 70, 50, 70, 80, 90. These are the temperature values at a point. Now what will happen? When the fluid crosses a section, the fluid will cross the section with non-uniform temperature. The fluid will cross the section with non-uniform temperature. And I think fluid crossing the section means energy crossing the section. So velocity represents kinetic energy crossing the section. Elevation head represents potential energy crossing the section. And temperature represents enthalpy, thermal energy crossing the section, है ना? So मेरे ख्याल से क्या होगा? When fluid is crossing the section, it is crossing the section with some enthalpy, but the fluid has a non-uniform temperature. Now let me first of all identify how much is the enthalpy crossing the section. Then I will tell you what is the meaning of bulk mean temperature. So let us suppose this is the cross section of the pipe, and being axis symmetric flow, axis symmetry means there is a symmetry about the center line. So I can define every term as a function of radius, velocity as a function of radius, temperature as a function of radius. So say for example, this is a circular strip, and the circular strip has an area of 2 pi r dr. इस circular strip का area कितना है? 2 pi r dr. And the velocity with which the water crosses the strip is small u. I hope you remember small u will also be a function of r. It will be minimum at the periphery, no slip condition, and maximum at the center line. है ना? Now what will you say? You will say that the mass crossing the strip. How will you write the mass crossing the strip? Velocity into area, that becomes the discharge, and discharge into density is the mass. So this is the mass crossing the strip per unit time. And I think if we multiply mass by specific heat and the temperature, we will get enthalpy crossing the strip per unit time. And obviously temperature is also a function of radius. Now this is the enthalpy crossing one strip. So when you will add enthalpy crossing all the strips, you will get total enthalpy crossing a section. पहले मुझे इतना बताओ, is this clear or not? पहले मुझे इतना बताओ. I think fluid crossing a section means thermal energy enthalpy crossing a section. But this fluid has a non-uniform temperature. So what we will do, we know that there is a symmetry about the center line. So everything can be written in terms of r coordinate, distance from the center line. So on all these points, the velocity will be same. On all these points, temperature will be same. So basically this temperature is 80 degrees Celsius. So for this particular strip, we wrote down the mass flow rate. That mass has some temperature. I wrote down the enthalpy. So this is the enthalpy that crosses the section per unit time. Guys, please मुझे बताइए clear है या नहीं है? Clear है या नहीं है? Is there a doubt over here or it is clear? Please do let me know. Now what I want to do, when you have a non-uniform temperature, when you have a non-uniform wall shear stress, you define an average shear stress. When you have a non-uniform coefficient of convection, you define an average coefficient of convection. Similarly, when you have non-uniform temperature, you define an average temperature.
That average temperature will represent the enthalpy crossing the section. So what you will do, you will say enthalpy crossing the section is equal to mass flow rate through the section into specific heat of the fluid into mean temperature of the fluid. This mean temperature is called as bulk mean temperature. Bulk mean temperature is a single average value of temperature that represents the enthalpy crossing a section. एक टेम्परेचर की एवरेज वैल्यू जो एक सेक्शन को कितना एंथैल्पी क्रॉस कर रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. और जब हम बोल रहे थे कि वाटर एंटर्स द पाइप एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री सेल्सियस पानी का मीन टेम्परेचर है. वाटर एग्जिट्स द पाइप एट 81 डिग्री सेल्सियस, वो 81 डिग्री सेल्सियस मीन टेम्परेचर है. एक्चुअल में टेम्परेचर सेम नहीं है, टेम्परेचर नॉन यूनिफॉर्म है, बट हम उसको मीन टर्म से डिफाइन कर रहे हैं. सो आप क्या बोलेंगे, आई थिंक यू विल गेट अ फॉर्मूला ऑफ मीन टेम्परेचर ओवर here, that will be Tm is equal to integral of rho u 2 pi r dr cpt upon m dot cp. ठीक है ना. Now first of all let me take this 2 pi outside and this cp and cp will cancel out because we take a constant cp, we take a constant cp and we also take a constant density. However, density is not constant. Different points have different temperatures, so they will have different densities, but we will consider a constant density also. So you know what will happen. So you will have rho will come out of the picture, 2 pi will come out of the picture, but velocity is a function of r. Similarly, temperature is a function of r and r dr. Also, Cp got cancelled out. In the denominator you have mass flow rate. How will you write mass flow rate? Density into discharge. How do you write discharge? Area into average velocity. Area into average velocity. And I think I always represent average velocity by capital U. So this will become your mean temperature. Now rho and rho will cancel out. Pi and pi will cancel out. And you will have mean temperature is equal to 2 times U T R D R by capital R square U. I think this is what you are getting. If I am correct or if I am correct. Please do let me know if this is correct or not. एक बार जरूर बता दो अगर मैं करेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं तो. Please do let me know if this formula is correct. So actually मुझे लग रहा है दीपांकर वो कन्वेक्शन वाला भी ना टॉपिक हल्का सा एक्स्ट्रा करा देना चाहिए. So ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो आया हुआ है अलग से और मैंने ये टॉपिक क्लास में भी नहीं कराया है, तो मेरे को मतलब लगा था कि मतलब वही था, एक्चुअली टाइम भी कम था तो मैंने ये एक टॉपिक क्लास में भी नहीं कराया है पर्टिकुलर क्लास में. इन द सेंस ये फॉर्मूलाज तो बताए हैं बट मैंने टेम्परेचर प्रोफाइल्स नहीं बताई हैं उनको, और आज मुझे थोड़ा फील हो रहा है कि मुझे टेम्परेचर प्रोफाइल्स बता देनी चाहिए थी. चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं. बट अब हम पहले डायमेंशनल एनालिसिस और पंप्स पे तो फोकस करेंगे और बाकी चीजें पैरेलली चलाएंगे. Okay, now let's read the question first. It says कि भैया for flow through a pipe of radius r, the velocity and the temperature distribution are as follows. So it has given you a velocity. So velocity as a function of r and x. So x means along the pipe length. So x means particular cross section and r means from the center line. So at this point. So this velocity is constant. This means everywhere the velocity is same. But temperature is not constant. Temperature is a function of r. Temperature is a function of r. And they are saying the bulk mean temperature is given like this. I think it is the same formula which we derived. We derived this na 2 by mean flow velocity capital R square integral of ut r dr. So they are asking you what is with the mean flow velocity um, what is the value of mean temperature. Now, first of all, can anyone tell me what is the mean flow velocity in this question? What is the value of um in this question? Can anyone tell me what is the value of um in this question? Mean flow velocity in this question. Anyone, please be fast. Anyone? Anish, Dipankar, beta mean flow velocity की value क्या आएगी?
इस क्वेश्चन में मीन फ्लो वेलोसिटी की, हाँ ऑफ कोर्स C1 आएगी. व्हाई? बिकॉज एवरीवेयर द वेलोसिटी इज कांस्टेंट. सो व्हेन एवरीवेयर द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इट इज यूनिफॉर्म, इट इज इटसेल्फ द मीन फ्लो वेलोसिटी. सो UM is nothing but C1. And in fact, this will also come outside only because this is a constant. So what you will say? You will say Tm is equal to 2U by UM capital R square, and this will cancel out only. So you will have integral of TR dr. So what will be our answer? Our answer will be Tm is equal to 2 by capital R square integral of TR dr. So you will say Tm is equal to 2 by capital R square integral of TR dr. And what is the formula of capital T? Formula of capital T is C2 1 minus R square by capital R square R dr. Let me check the formula if this is correct or not. R cube, sorry, there is a cube. There is a cube in the question. So क्या है cube? क्या है? हाँ cube है. So there is a cube in the question. Now I think when we will integrate, this will become Tm is equal to 2 by capital R square. Obviously this integral is from 0 to capital R. C2 is a constant, it will come outside, and in the integral we have, so R will go inside. What will be the integral? R square by 2. When this R will go inside, this will become R raised to power 4. So this will become minus R raised to power 5 by R cube. R raised to power 5 by 5 R cube, and R values from 0 to capital R. So obviously when we will put a capital R over there, so we will have capital R square by 2 minus capital R square by 5, because R raised to power 5 by R cube. So this much. So what will be this? So ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा Tm is equal to 2C2 by capital R square into 3 capital R square by 10. So R square cancel out. So you will have Tm is equal to 0.6 C2. So your answer is totally correct. Anish का आंसर बिल्कुल सही है. I know Dipankar is also getting the same answer. So your answer is correct. Is that clear to everyone? All of you, I think ready देख रहे हैं साथ में वीडियो. So the two people who are watching the video, please do let me know. एक तो मैं खुद ही हूँ, मेरे स्क्रीन पे चल रहा है. So the other two people who are watching the video, please do let me know if this is correct or not. And if there is a doubt, you can obviously ask. The answer is 0.6 C2. 0.6 C2. Please do let me know. Else we will move on to the next question. जल्दी से बता दीजिए. जल्दी से बता दीजिए. प्लीज बी फास्ट, प्लीज बी क्विक. गाइस जस्ट अ सेकेंड. गाइस जस्ट अ सेकेंड. जस्ट अ सेकेंड. Okay, so I think this question is very simple, है ना? It's a direct question. The ratio of momentum diffusivity to thermal diffusivity, everyone knows its Prandtl number, है ना? Nusselt's number you know, Biot's number you know, Lewis number check कर लेना क्या होता है Lewis number. So एक बार Lewis number पूछा गया ऐसे मिसमैच करके, एक बार Weber number पूछा गया मिसमैच करके, और एक बार Schmidt number भी पूछा गया था. But this was like quite long back. So Lewis number is not a part of your syllabus, but still for knowledge you can check it. Now check a fluid Prandtl number equal to 1. So जैसे ही Prandtl number equal to 1 है, I think your mind will say Prandtl number equal to 1. So generally delta V by delta T is equal to a constant Prandtl number raised to power 1 by 3. And in many situations this constant is almost 1, right? So what will happen? That many situations means a lot of practical situations related to gases, not all gases and not always. For say for example for air, this constant is like 1 by 1.025 and Prandtl number is 0.7. ऐसा मतलब ठीक है, but हमें कुछ भी नहीं दे रखा तो हम ये लेंगे. अच्छा, so एक बार मतलब वैसे मैंने भी नहीं किया कभी एक्सपेरिमेंट, एक बार कॉलेज में ही किया था एमटेक में.
तो बड़ी बैंड बजी थी। तो मेरे को अभी भी याद है, हमारे को वो एक्सपेरिमेंट में 2-3 दिन लगे थे। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्या एक्सपेरिमेंट था, मगर हमने किया था एक बार एक्सपेरिमेंट। सो मैं याद करके देखता हूँ, कल बताऊंगा कि क्या एक्सपेरिमेंट था। कॉलेज में तो मस्ती में रहते हैं, तो तुझे पता ही है कितना काम होता है। ओके, सो एंड व्हेन आई वाज इन कंपनी, सो आई वाज मेजरली रिलेटेड टू एयर इनटेक मैनिफोल्ड्स। सो मी एंड माय टीम वुड फर्स्ट ऑफ ऑल डू द फ्लो एनालिसिस विदाउट कंसिडरिंग द टेम्परेचर, और उसके बाद टेम्परेचर का मॉडल कोई और लगाता था, क्योंकि एयर इनटेक मैनिफोल्ड इंजन के पास होता है, तो पैकिंग डाटा के अकॉर्डिंगली अलग अलग लोकेशंस पे टेम्परेचर वैल्यूज भी अलग अलग आती हैं। सो ऐसे। अच्छा, बीटेक कॉलेज, सो आई डिड माय बीटेक फ्रॉम कुरुक्षेत्र, फ्रॉम NIT कुरुक्षेत्र, and I was getting ISM Dhanbad that time, so I was looking for mechanical only, and then MTech I did from robotics, Ropad, IIT Ropad. Okay, now check a fluid पाइलअप ही रहेगा। नहीं, आजकल ऐसा नहीं है। आई एम टॉकिंग टू स्टूडेंट्स रेगुलरली। जो लोग भी प्रोजेक्ट पूछ रहे हैं ना, मैं कंपेरेटिवली उनके साथ ज्यादा कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तो 3-4 दिन से मैंने बहुत कम्युनिकेट किया है प्रोजेक्ट वालों के साथ। A fluid Prandtl number is equal to 1 at 500 Kelvin flows over a flat plate of 1.5 meter length. So there is a flat plate, it has a length of 1.5 meter, and fluid at 500 Kelvin flows over it. Fluid at 500 Kelvin flows over it. The plate is maintained at a surface temperature of 300 Kelvin, and the fluid is moving with the speed of 10 meter per second. This is mentioned in the question only. Assuming the kinematic viscosity to be this much, the boundary layer thickness in mm at 0.5 meter from the leading edge is. वो बोल रहे हैं कि when the fluid will flow over a flat plate, we also know there will be a formation of velocity boundary layer, there will be a formation of thermal boundary layer, but since Prandtl number is equal to 1 and we majorly treat the constant to be 1, so delta V and delta T will be same, so velocity boundary layer and thermal boundary layer will coincide. Now they are asking you, at a distance x, if I take 0.5 meters, what will be the thickness of velocity boundary layer? I think everyone knows that for flow over flat plate, if the boundary layer is laminar at a section, then for that section we can use Blasius solution. For that section, for that particular section, Blasius solution says the thickness of velocity boundary layer is 5x by root Rex. If the flow at the section is laminar, and here since Prandtl number is equal to 1, then delta T is equal to delta. Now first of all, let us find out the Reynolds number at section x. So you will write rho u naught x by mu. Now properties of the fluid are given to us. So kinematic viscosity is given 30 into 10 raised to power minus 6. I think dynamic viscosity by density, that is kinematic viscosity. So u naught by x, mu by rho, that is kinematic viscosity. So 30 into 10 raised to power minus 6. Velocity is 10 meter per second and x is 0.5 meter. So I think this decimal and this decimal will cancel out. This will become 1 by 6 and we will have 1 by 6 into 10 raised to power 6. So that will become 1.667 into 10 raised to power 5. So this is the Reynolds number. मेरे बहुत डाउट्स हैं डैम वाला एंड थोड़ा और, अब तो वो मैं भी भूल गया जो आपने, अच्छा हाँ। सो एक्चुअली मैंने उनको पूछा नहीं, मतलब मेरी काफी टाइम से बात नहीं हुई है तो पूछा नहीं। एक्चुअली एक और स्टूडेंट ने भी डाउट पूछा था, तो उसने डाउट पूछा था कि किसी भी हेड कैसे निकालते हैं, किसी भी लोकेशन पे अगर हमें हेड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे पानी का हेड। तो मैं उनसे पूछ सकता हूँ, बट ना मेरी बात नहीं हुई है काफी टाइम से। मैं फोन करूंगा उन्हें नेक्स्ट टाइम। फोन पे तो अच्छा नहीं लगता, बट अभी मिल के आऊंगा उनसे 10 दिनों के अंदर अंदर, तब मैं पूछूंगा। सो मेरे दादाजी जो है वो डैम पे काम करते थे, तो वो ये सब चीजें चेक करते थे। हाँ मेरे को याद है,
वो डैम के दोनों साइड पानी भर देते हैं, कुछ ऐसा बताया था ना, पानी भर देते हैं, एक लेयर बना के पानी भर देते हैं, तो ऐसा पूछा था कुछ। अच्छा, so Rex is this. So if you know the value of Rex, you can get the value of delta T, you can get the value of delta, and you will have 5x, which is 0.5, under root of Rex, which is 1.667667 into 10 raised to power 5. So what I will do, this I can write 2.5. In 10 raised to power 5, I will take 110 as common, 16.667, and under root of 10 raised to power 4, that is 100. So 2.5 divided by under root of 16.667 divided by 100. So this will become 6.123 into 10 raised to power minus 3, obviously meters, or 6.123 mm. 6.123 mm, है ना? ठीक है. So guys check. So वो जो लड़का पूछ रहा था ना डाउट हेड वाला, तो मैंने उसका प्रोजेक्ट ही चेंज करा दिया. चलो फिर, मतलब वो प्रोजेक्ट सोच रहा था डैम, मतलब इस पे हेड एंड टरबाइन पे, तो मैंने उसका प्रोजेक्ट सोलर पैनल पे करवा दिया. So he is a good student from UP. Okay. So guys, I hope this is correct. My answer is correct. Please do check if this is correct or not. Please do let me know if this is correct or not. Otherwise, we will see the other question, which is very direct. There are 4 options given to us. In the options, there are ratio of forces. है ना? So what they are saying, inertia force to viscous force. I think that is direct only. That is your Reynolds number. Buoyant force to viscous force. So this we have seen in natural convection, Grashof number. Buoyant force to inertia force और inertia force to surface tension force. चेक करो कौन कौन से नंबर्स होते हैं. So I have told you Euler's number, Weber's number, Mach number, Cauchy number, है ना? So चेक करो, ध्यान करो, आपको सारे नंबर्स पता होने चाहिए. But in heat transfer we use the first 2 numbers and our answer is option B. ठीक है. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फटाफट कवर अप करते हैं. सो आई थिंक 1, 2 and 3 and 4 क्वेश्चंस आर देयर इन माय पीपीटी. और इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, तो वो भी चेक करेंगे. हाँ, पर इसका नाम क्या है? क्वेश्चन है, इसका नाम क्या है? Related to capillary effect से ही है. So whenever there is flow through very thin tubes where the capillary effects come into picture, surface tension forces come into picture, then you use this number. मगर इसका एक स्पेशल नाम भी है. तो आपको जो इंपॉर्टेंट नंबर्स पता होने चाहिए इन डेफिनेशन, दैट इज फ्रॉडे नंबर, वेबर नंबर, यूलर्स नंबर, कॉशी नंबर, मार्क नंबर. So these are the numbers in fluid mechanics which can be asked directly, and obviously Reynolds number. And in heat transfer, the numbers to be remembered: Grashof number, Prandtl number, Reynolds number, Nusselt's number, Biot's number, Rayleigh's number and Fourier's number. उसके अलावा आपको जो भी पूछा जाए वो दूसरे ऑप्शंस में आएगा. वैसे तो नंबर बहुत सारे होते हैं, पैकलेट नंबर होता है, स्टांटन नंबर होता है, श्मिट नंबर तो चलो डिफ्यूजन कॉफिशिएंट में चला जाता है. वैसे तो नंबर्स बहुत सारे हैं. चलो फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक दिस इज अ वेरी क्विक क्वेश्चन. वी कैन डू इट डायरेक्टली. इन लेमिनार फ्लो ऑफ एयर, वेरी गुड वैल्यू. सो Prandtl number of air is like 0.69 something over a heated flat plate. So for the fluid, the comparative to fluid, the plate is heated up. So temperature of the plate is more than the fluid. So obviously between the fluid and the plate there will be heat transfer. There will be formation of velocity boundary layer as well as thermal
thermal boundary layer. So delta and delta T will come into picture. So delta represents hydrodynamic boundary layer, delta T represents thermal boundary layer. So we also know that when Prandtl number is equal to 1, delta is equal to delta T. When Prandtl number is greater than 1, this means momentum diffusivity is more effective. The more amount of fluid will be slowed down, so delta will be thicker. And when Prandtl number is less than 1, thermal diffusivity is more effective. More fluid will gain heat, so delta T will be thicker. है ना? So now in this case, Prandtl number is less than 1, Prandtl number is less than 1, so delta less than delta T. So मैंने भी सही आंसर दिया है. I hope I have given the answer in correct manner. Yes, Anish Dipankar, totally correct. Anish Dipankar, सभी का totally correct. So without wasting any time, let us move on to the next question. Now in last 25 years, 30 years, 30 तो नहीं बोलना चाहिए because I have not checked the subjective question of previous years. But you can say in more than 20 years, we have not got a question of natural convection except for 2019. ये Grashof number जरूर आया है. This question of Grashof number has definitely come, but you have not got any kind of numerical or something. So this was the first time in long number of years that you got a question on natural convection. So it says a thin vertical plate of height capital L. So let me draw a thin vertical plate of height capital L. A thin vertical plate of height capital L. Of height capital L. And infinite width perpendicular to the plane of figure. So basically by infinite width they mean that terms will not be a function of z direction. Okay, this is what they mean. So if they want to say, if you consider this as x direction, this as y direction, then perpendicular to plane of paper, that will be z direction. So properties are not a function of z direction. This is what is the meaning of infinite width. Now it says this plate, so actually there was a figure also, and in the figure there was the same thing. So it says is losing heat to the surroundings by natural convection. So this plate is losing heat to the surroundings by natural convection. So I think what will happen, if the plate is losing heat, the nearby fluid will gain heat. Once the nearby fluid will gain heat, it will try to move up. So abhi kuch din pehle in the morning session, 11 o'clock, so in natural convection, I even derived an equation. So we derived the momentum conservation principle. So where we saw how to write down the buoyant force using the density difference. So अगर आप check करना चाहो तो check कर सकते हो, and how Grashof number comes into picture. So the fluid will gain heat from the surface, its temperature will rise, its density will decrease, and this fluid will rise up. Very good, Dipankar, बिल्कुल correct answer. Now once the fluid will rise up, this boundary layer formation will occur, and we know that the velocity profile is something like this and temperature profile will be something like this. Baki, there is no need of profiles in the question. It says the temperatures of the plate and the surroundings are constant. But by constant, it doesn't mean that everywhere the temperature is same. It says if the temperature of plate is Ts, it is a constant. It is not changing with time. If the temperature of the fluid is T infinite, it is a constant. It will not change. The relationship between average Nusselt number and Rayleigh's number is given as this. So we know that when we are talking of natural convection, Nusselt's number is a function of Rayleigh's number, and Rayleigh's number is what? It is a product of Grashof number and Prandtl number. Product of Grashof number and Prandtl number. Actually, it was observed that when we perform experiments, we found out that in a lot of cases, Nusselt's number depends upon the product of Grashof number and Prandtl number. So we started calling this product as Rayleigh's number. And either you take Grashof number or Rayleigh's number, it will tell you whether in a given condition flow is laminar or turbulent. Now it says, कहाँ चला गया मैं? So this is the case, Nusselt's number. The length scales of the Nusselt number are height of the plate. So basically, how do you write Nusselt's number? I think in order to write Nusselt's number, you write it as HLC by K. And this is how you write. So this is the length scale. That is the characteristic length. So for characteristic length,
we are going to use height of the plate. And in that video of natural convection also I told you कि भैया for vertical plates or vertical cylinder the natural convection from surface characteristic length is the height of the plate or height of the cylinder. If you are talking of horizontal cylinder, if you are talking of if you are talking of sphere, so diameter will be the characteristic length. If you are talking of horizontal plate, then surface area by perimeter will be the characteristic length. तो इस तरह से characteristic length होती है. Now for Nusselt's number, this is the characteristic length. Now they are saying if you keep all the parameters constant, which is written over here, and the height of the plate is increased to 16L, keeping all other factors constant. So in natural convection, what are the factors? Surface temperature, fluid temperature, acceleration due to gravity, density of the fluid, dynamic viscosity, specific heat, and conductivity of the fluid. So they are saying all other factors are constant except for height of the plate. So what will happen to coefficient of convection? So I think it's very easy. The question is direct. So we know Nusselt's number is equal to HL by K, or H is equal to Nusselt's number K by L, and Nusselt's number is equal to some constant, Rayleigh's number 1 by 4 into K by L. Now what is Rayleigh's number? It is the product of Grashof number and Prandtl number, and when we write down the formula of Grashof number is rho square LC cube G beta T S minus T infinite divided by mu square. What is Prandtl number? Mu C by K. So I think Grashof number means cube of the length of the plate, height of the plate. So what will happen? You will have GR length cube. So L cube raised to power 1 by 4, and in the denominator there is L also, but all other terms are constant. So you will directly say coefficient of convection is proportional to L raised to power 3 by 4 upon L. So coefficient of convection is proportional to L raised to power minus 1 by 4. So they are saying if the length becomes 16 times, then what will happen? So I think you will simply say H1 by H2 is equal to L2 by L1 raised to power 1 by 4. Actually it was minus 1 by 4. So L1 I have written in the denominator. Now they were asking us what is H1 by H2? They were not asking you H2 by H1. They were asking us H1 by H2. Initial coefficient of convection by final coefficient of convection. Now L2 is 16 times. So 16 1 by 4, that is 2 times. So actually coefficient of convection decreases in this case. And you can also say, sir, how can coefficient of convection decrease? When there is more surface area, heat transfer rate will be more. I will say yes, heat transfer rate can be more. But we are not talking of heat transfer rate. We are talking of coefficient of convection. And since the length of the plate will be more, the boundary layer formation will be more, and the viscous forces will be more effective. Viscous forces will slow down the flow. Coefficient of convection will decrease. ठीक है ना? इस तरीके से. So I think simple question था. Anish, beta please let us know if you have also got the answer. हाँ दीपांकर, बेटा turbulence में, convection में there are very good number of assumptions, और मतलब ये है कि अभी तक turbulence तो मैंने एक बार शायद बताया भी था. So turbulence को solve करते हो आप CFD में, है ना, डायरेक्ट न्यूमेरिकल सिमुलेशन लगाते हो. आज तक सिर्फ 8 प्रॉब्लम्स ऐसी हैं टर्बुलेंस जिनके मॉडल सॉल्व किए गए हैं. 8 प्रॉब्लम का मतलब जैसे एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, पाइप का डायमीटर इतना, लेंथ इतना, ये इस तरीके से सिर्फ 8 सिचुएशंस ऐसी हैं जिनको हमने एनालिटिकली सॉल्व किया है यूजिंग कंप्यूटर्स, यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड्स. सिर्फ 8. आप समझ रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड स्टफ है ये. सो ऐसा है. नाउ चेक, हम तो फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स कंसिडर करते हैं. फ्लो थ्रू रेक्टेंगुलर चैनल को भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, उसमें से 2 साइड के सरफेस हटा देते हैं.
है ना, लेमिनार में भी assumption ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि ज्योमेट्री भी, विस्कोसिटी भी और टर्बुलेंस भी, ये तीनों ही मैथमेटिकल इक्वेशंस को बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं. So guys, let us go through the question quickly. So what we have a match the following. Reynolds number, everyone knows inertia force by viscous force. Grashof number, everyone knows natural convection buoyancy force versus viscous force. Everyone knows Nusselt's number. So Nusselt number की ये definition मैंने क्लास में नहीं बताई थी इस बार. So just one second. Prandtl number is momentum diffusivity, that is kinematic viscosity by thermal diffusivity, and Nusselt's number is this. Now check. So Nusselt's number has multiple definitions. One definition is the temperature gradient in the layer adjacent to solid divided by the reference temperature gradient, है ना? But it has one more definition, and that definition is enhancement in heat transfer due to convection over conduction. एक और definition होता है, if the layer of fluid is stagnant, if the fluid mass is stagnant, then suppose there are two plates and these plates are separated by large distance. One is hot, other one is cold, and the fluid between them is stagnant. So between the two plates, heat transfer will occur by conduction. But if the fluid is not stagnant, heat transfer will occur by convection. Then how much the heat transfer rate increases by convection as compared to conduction, that is also called as Nusselt's number. तो ये Nusselt's number होता है. हाँ, very good. And this can never be less than 1. This will always be greater than 1. Totally correct. Totally correct. बिल्कुल सही है. Good. So I think let's move on to the last question. So what is the last question? Now it says, so I think some portion of the question is hidden behind me, है ना? So what I will do, I will read out the question first. So, and I will keep on marking the drawing the diagram. Water flows through a tube of 3 centimeter internal dia and अच्छा मैं गायब हो जाऊं, हाँ, that would be good. Just a minute guys, that would be good. Now you can see, good idea. Water flows through a tube of 3 centimeter internal dia and length of 20 meters. So there is a tube whose diameter is 3 centimeter and length is 20 meters. So diameter is 3 centimeter and length is 20 meter, right? Now it says the outside surface of the tube is heated electrically. So maybe we are talking of a geyser. So that it is subjected to uniform heat flux circumferentially and axially. So it says the external surface of the pipe is subjected to uniform heat flux axially. So on all these points, heat flux is same. It is subjected to uniform heat flux circumferentially. So on all these points, heat flux is same. So basically, the entire surface of the pipe is subjected to same heat flux. Entire surface of the pipe is subjected to same heat flux. इस पूरी पाइप पे यूनिफॉर्म हीट फ्लक्स है. Now it says the mean inlet and exit temperature. So basically bulk mean temperature of water. So bulk mean temperature of water at inlet is 10 degrees Celsius. Outlet it is 70 degrees Celsius respectively. The mass flow rate of water is 720 kg per hour. Disregard the thermal resistance of the tube wall. So basically it says if we will see the tube from the inlet side, we will see this, right? And from outside we are supplying some heat. Now this heat will first of all get conducted from the tube wall and then it will be convected to the fluid. So there will be a temperature drop across the tube because of thermal resistance of the tube. But if the tube is very thin, if the thermal resistance of tube is very less, then this temperature and this temperature will almost be same. So they are saying the outer surface temperature and the inner surface temperature of the tube are almost same. Now they are saying disregard the thermal resistance of the tube wall. The internal heat transfer coefficient is this.
take specific heat of water to be this. What is the inner surface temperature at the exit of the tube? वो क्या बोल रहे हैं आपको? Exit of the tube पर inner surface temperature find out करने को बोल रहे हैं. Now guys, please note, when the tube is subjected to uniform heat flux, then the temperature of the surface is a function of x. And obviously the mean fluid temperature is also a function of x. So when the fluid will move ahead, its temperature will change from Ti to T0. And the surface temperature will also change from Tsi to Ts0. However, Tsi minus Ti is equal to Ts0 minus T0, and the coefficient of convection at the inlet side is same as coefficient of convection at outlet side. जितना coefficient of convection यहाँ पर है, उतना ही coefficient of convection यहाँ पर भी है. This is what happens when you are talking of uniform heat flux. Now let us say the coefficient of convection is H, which is also given in the question. And they are asking you surface temperature at outlet. So you have to apply the same methodology that we applied in the second part of GATE 2013 question. तो 2013 का जो क्वेश्चन था उसमें जो मेथोडोलॉजी लगाई थी वही मेथोडोलॉजी यहाँ भी लगेगी. So आप क्या बोलोगे? आप सीधा बोलोगे यार, I think at the outlet the heat flux between the surface and the fluid will be H into Ts0 minus T0. So I think I can directly write Ts0 is equal to T0 plus Q dot by H. है ना? So I think if I know the value of T0, if I know the value of heat flux, if I know the value of H, I will be able to find out the surface temperature also. Now, firstly, let me check, do I know the value of T0? Yes. At the exit, what is the fluid temperature? At the exit, fluid temperature is 70 degrees Celsius. Do I know the value of H? Yes, 1697 watt per meter square Kelvin. So what about T? What about T0? What about Q dot? Q dot we do not know. So we will have to find out a method to predict Q dot value. हमें कोई ना कोई method find out करना पड़ेगा ताकि we can predict the Q dot value. So let us check if I can predict the Q dot value or not. So who will tell me how to find out the value Q dot? कौन बताएगा Q dot value कैसे find out करें? Please be quick. क्विक मत रहो, आराम से सोचो और बताओ Q dot value कैसे find out करेंगे? How to find out Q dot value? How to find out Q dot value? Very good Dipankar, totally correct. So we know the mass flow rate. Mass flow rate is 720 kg per hour. I think that becomes 720 by 3600. That is 0.5 kg per second. We know the mass flow rate. We also know the incoming temperature of fluid, that is 10 degrees Celsius. We also know the outgoing temperature of fluid, that is 70 degrees Celsius. अरे भैया, incoming temperature means incoming enthalpy. Outgoing temperature means outgoing enthalpy. So incoming enthalpy, outgoing enthalpy, you will be able to predict how much heat is supplied to the control volume per unit time. So you will directly say capital Q dot, that is the heat supply rate to the pipe, is equal to the rate at which enthalpy goes outside minus the rate at which enthalpy comes inside. But this is the case of uniform heat flux. So heat flux into the surface of the pipe, that is pi dl. This will become mass flow rate into Cp into T0 minus Ti. I think I can find out the heat flux. That will be m dot Cp T0 minus Ti upon pi dl. So what will be your value of Q dot? Mass flow rate is 0.5 kg per second. Specific heat of वाटर भी, यही बताया ना बेटा दीपांकर. ये देख बेटा क्या बोला उन्होंने बोला है
axially and circumferentially. So by circumferentially they meant heat flux is same at all these points, and by axially they meant heat flux is also same at these points. तो सभी points पे heat flux same है. So Cp, how much is the value of Cp? 4.179 kilojoule per kg Kelvin. So that is 4179. What is the outlet temperature? 70. What is the inlet temperature? 10. And how much is diameter of the pipe? एक बार diameter of the pipe consider कर लेता हूँ. So diameter of pipe is 3 centimeter and length of pipe is 20 meter. Length of tube is 20 meter ना? हाँ, 20 meter. So 3 centimeter into 20 meter. So guys, please find out the answer for this. Please check the answer for this. दीपांकर क्लियर है ना बेटा? क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सिली एंड सर्कमफ्रेंशियली, तो हमें यूनिफॉर्म लेना है. सो 0.5 into 4179 into 60 divided by pi divided by 0.03 divided by 20. चेक करो, मेरा हीट फ्लक्स रेट काफी ज्यादा आ रहा है. So we are getting 66510.8 watt per meter square. Now if we want to find out the surface temperature at outlet. Surface temperature at outlet is mean fluid temperature at outlet plus heat flux, so upon coefficient of convection. So I think this will become T naught, which is 70. Heat flux is 66510.8 and coefficient of convection is 1679, I think. 1697. Coefficient of convection is 1697. 1697 plus 70. So I am getting an answer of 109 degree Celsius. मेरा आंसर 109 डिग्री सेल्सियस आ रहा है. आप लोग एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लो, कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो. एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेते हैं. कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेते हैं. थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है जहां तक मुझे याद आ रहा है. सो डायमीटर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, लेंथ मैंने 20 सेंटीमीटर डाली है, मास फ्लो रेट 720 by 3600, सो 2/10. 2/10. यस गाइस, एक मिस्टेक हो गया है, 720 kg per hour. So 720 by 3600, that is 2/10. So 0.2 होता है ये. This is 0.2. ये मेरे से मिस्टेक हुआ. Mass flow rate is 0.2. Mass flow rate is 0.2. Please note, mass flow rate is 0.2. So I think I will have 66510.8 divided by 0.5 into 0.2. So this value will become 26604.32. 26604.32. Now check the answer please. 26604.32 divided by 1697 plus 70. So answer is 85.6 degree Celsius. This is the correct answer. हाँ दीपांकर बेटा, चाहे तो वैसे मतलब एक्सिस नहीं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. तो जब आप मतलब एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला होता है ना, तो वो सारे सरफेसेस कंसिडर करके ही निकाला जाता है. बट हमारे केस में वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है. अगर क्वेश्चन में एक्सियल सरफेसेस नहीं लिखे हुए तो हम इनको इग्नोर कर देंगे, मगर जब एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं तो वो तो पूरे के लिए भी निकालते हैं. एक्सपेरिमेंट में जब वो करते हैं तो वो पूरे के लिए भी करते हैं. डिपेंड करता है, अगर डायमीटर छोटा है एज कंपेयर टू लेंथ तो उसको इग्नोर कर देते हैं, और अगर डायमीटर बड़ा है एज कंपेयर टू लेंथ, इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो वो दोनों सरफेसेस के लिए निकालते हैं. अब आपके पास जो एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला होगा क्वेश्चन में, उसमें बताया भी जाएगा कि आपको एंड सरफेसेस भी कंसिडर करना है. तो अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा हुआ तो फिर हम सिर्फ पेरिफेरल सरफेस ले लेंगे.
ओके सो गाइस दिस इज ऑल. ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं एक्सेप्ट फॉर 2 क्वेश्चंस. सो टिल नाउ वी हैव कंसिडर्ड ऑल द क्वेश्चंस. तो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं. सो देयर आर 2 क्वेश्चंस एंड 1 क्वेश्चन एक्चुअली वी कैन डू. या फिर एक काम करते हैं, इसको भी मिसलेनियस क्वेश्चन में ही करते हैं क्योंकि मैं मिसलेनियस में टेम्परेचर प्रोफाइल बताने वाला हूं. सो इन कमिंग डेज first of all I am going to have a proper session on dimensional analysis. So it will not be a very elaborate course of 7-8 hours. ऐसा नहीं होगा. हम 4-4.5 घंटे इसको पढ़ेंगे and in the same day in the night we will have previous year practice questions. So in the afternoon I will teach this session and we will have theory plus PYQ, previous year question. Then we will go through pump. So in pump I will majorly tell centrifugal pump because centrifugal pump is the part that is asked in the GATE exam. तो pump पढ़ेंगे और pump के previous year question करेंगे. उसके अलावा on 26th December I have a session of complete revision of FM that will start at 11 a.m. That will start at 11 a.m. So 11 a.m. को चालू करेंगे और 11 a.m. से लेकर 3 p.m. and then 4 p.m. to 8:39 whatever goes on. So in these hours my major aim is to write notes of at least first 6 chapters, that is up to flow through pipes. Apart from flow through pipes, chapter like dimensional analysis we will do completely. Then we will solve questions also. The chapter of pump we will do a theory session and the same day previous year question. Similarly turbines we will do a theory session and previous year question, and similarly for compressible flow. So these dates will majorly be like 30th December and onwards. 30th December के बाद इन्हें प्लान करूंगा. और एक हीट ट्रांसफर का मिसलेनियस सेशन होगा. सो इन मिसलेनियस सेशन 2-3 additional points, generally those points which are not asked in GATE exam. So I told you na that 2 questions are there which are slightly different. So one of the questions we can solve directly now also. Actually I have the question, पर मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं उसका concept बता दूंगा because that is related to temperature profile. तो हम वो देख लेंगे और फिर उसकी बात करेंगे. So this session will most probably be held on 2nd January और 3rd January. किसी एक दिन करेंगे. अभी मैं कल नहीं रखना चाहता सेशन so that I can plan for day after tomorrow session also, and on 26th I will plan these remaining sessions. हाँ सर, सिलेंडर वाला का आंसर टॉप पर सेंट्रली होगा. क्या चीज निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन बताना है ना. हाँ, सो जो टॉप सरफेस होता है उस पे कोफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन मैक्सिमम आएगा क्योंकि कंपेयर टू वर्टिकल सरफेस कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है. और यार बॉटम वाला जो सरफेस है, अगर आपका सरफेस हॉट है तो क्या होगा, ये आपका बॉटम सरफेस है, यहाँ की हवा गर्म होगी, ऊपर उठने की कोशिश करेगी, बट दिस सरफेस विल स्टॉप इट. सो एक्चुअली दिस सरफेस इज रिस्ट्रिक्टिंग द मोशन, है ना. फिर अल्टीमेटली हवा को यहाँ स्पेस मिलेगा और हवा यहां से जाएगी. सो टॉप सरफेस पे H मैक्सिमम, फिर पेरिफेरल सरफेस पे और फिर बॉटम सरफेस पे when the surface is hotter, and when the surface is colder the air will lose heat to the surface. उस केस में this surface will oppose the downward motion of air. तो यहाँ पे H की वैल्यू मिनिमम, फिर यहाँ पे H की वैल्यू और यहाँ पे H की वैल्यू मैक्सिमम. ठीक है दीपांकर, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द सरफेस इज हॉटर और कोल्डर. सो वन ऑफ द एंड सरफेसेस विल हैव मैक्सिमम हीट कन्वेक्शन कोफिशिएंट एंड वन विल हैव मिनिमम हीट कन्वेक्शन कोफिशिएंट. ठीक है, तो सही है. नहीं सर, नेचुरल कन्वेक्शन में स्फेयर हो तो या फिर सिलेंडर.
हाँ, सभी के केस में। बट एक्चुअली वो जो आप क्वेश्चन बोल रहे हो ना, वो वाला ऐसा क्वेश्चन नहीं था। वो क्वेश्चन पता क्या है? वो क्वेश्चन बाउंड्री लेयर सेपरेशन पे बेस्ड है बेटा। वो बोल रहा है कि आपके पास एक स्फेयर है एंड द एयर इज मूविंग लाइक दिस इन दिस मैनर, सो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स विच पॉइंट्स विल हैव मैक्सिमम हीट कन्वेक्शन कोफिशिएंट। वो ऐसे बोल रहा है। वो नेचुरल कन्वेक्शन पे बेस्ड नहीं है क्वेश्चन, वो फोर्स्ड कन्वेक्शन का क्वेश्चन है जो कि बाउंड्री लेयर सेपरेशन पे बेस्ड है। तो ये मैं सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें कुछ एक्सपेरिमेंटल फंडा भी है। हाँ हाँ, तो यस सर, आई एज्यूम इट्स हॉट। नहीं, अगर ये देखो ऐसे होगा, इस तरह से बनेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ द सरफेस इज हॉट, on this surface you will have coefficient of convection, on this surface you will have coefficient of convection, on this surface also you will have coefficient of convection, and surface is hot. Now check, if I talk only of the peripheral surface, so this is the boundary layer formation. So only for peripheral surface the coefficient of convection is maximum at leading edge. So if you talk only of peripheral surface, here the coefficient of convection is maximum and here the coefficient of convection is minimum. But now we are not talking of single surface, we are comparing multiple surfaces. Now when you talk of convection from flat plate, I think it's very easy. What will happen? This layer of air will get hot, it will rise up, space will be occupied by remaining cold air, and friction forces are minimum. But when you talk of vertical surface, as the fluid will rise up, this air will tend to occupy the space and this air will observe a friction force from the surface. So greater is the length, greater will be the, हाँ ठीक है, सो मेरे ख्याल से क्लियर है, बट मैं कंप्लीट कर ही देता हूं. सो ग्रेटर इज द लेंथ, मोर विल बी द फ्रिक्शन फोर्सेस एंड लेसर विल बी द एवरेज कोफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन. एंड व्हेन वी टॉक ऑफ दिस सरफेस, heat air will get heated up, it will try to rise up but it will be blocked, so it will go in this manner. So सबसे इजी मोशन कहाँ हो रहा है? सबसे इजी मोशन टॉप में हो रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन मैक्सिमम आएगा, फिर पेरिफेरल सरफेस पे आएगा और फिर इस पे आएगा. जब हम इन दो को कंपेयर करते हैं तो इसमें लेंथ का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर लेंथ बहुत लार्ज हो जाए ना तो कोफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन बहुत कम हो जाता है, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में भी ऑब्जर्व किया था, ये वाले क्वेश्चन में. हाँ, तो अब अगर उसको हम हॉरिजॉन्टल रख देते हैं, इफ यू कंसिडर दिस एज हॉरिजॉन्टल, सो व्हाट विल हैपन? द एयर विल टेंड टू मूव इन दिस मैनर, एयर विल टेंड टू मूव इन दिस मैनर, है ना, ऐसे ही होगा ना. बट यहां पे एक फिनोमिना भी आएगा, दैट फिनोमिना इज बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन. तो आपको यही देखना है कि इन पॉइंट्स को कंपेयर करें तो क्या आएगा. सो ये थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है, तो इसी चीज की हम बात करने वाले हैं, वो बाउंड्री लेयर सेपरेशन की बात करने वाले हैं. तो आपको पता है ना, अगर फ्लो वेलोसिटी बहुत हाई हो, पर उसके लिए फ्लो वेलोसिटी बहुत हाई भी होनी चाहिए, जो कि नेचुरल कन्वेक्शन में अचीव नहीं हो पाती है, तो हाई भी होना चाहिए. हाँ, बट फ्लो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा ना दीपांकर. अगर फ्लो वेलोसिटी हाई है तभी आपको क्या कहते हैं, ये आपका मिलेगा, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा जोन बोलते हो अब मैं भूल गया हूं, एकदम से ध्यान नहीं आ रहा है. तभी आपको बाउंड्री लेयर सेपरेशन मिलेगा और वेक रीजन मिलेगा. मगर अगर आपकी वेलोसिटीज कंपैरेटिवली लो हैं एज कंपेयर टू ज्योमेट्री, तो भैया पार्टिकल्स को इतना डिस्टेंस नहीं मिल रहा है कि वो हाई वेलोसिटी अचीव कर पाए और फ्लो लेमिनार मिलेगा. उस केस में तो ये लीडिंग एज है, ये ट्रेलिंग एज है, तो लीडिंग एज पे मैक्सिमम होता है और ट्रेलिंग एज पे मिनिमम होता है ना. तो वो डिपेंड कर रहा है कि आपकी डायमेंशंस कैसी हैं. अगर डायमेंशंस लार्ज हैं तो पार्टिकल्स को मूव करते टाइम एक सफिशिएंट स्पेस भी मिलेगा एक्सेलरेट करने के लिए, तो काफी सारी चीजें कंबाइन की जाएंगी. ठीक है ना. सो हम मेजरली फोर्स्ड कन्वेक्शन के केस में देखेंगे, पर मैं बताऊंगा, हल्का सा आइडिया जरूर दूंगा नेचुरल कन्वेक्शन का भी. अभी इसलिए भी नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसके लिए ना मैं पहले एक एक्सपेरिमेंटल वो पढ़ के आऊंगा. तो एक पर्टिकुलर रिसर्च पेपर है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, वो रिसर्च पेपर पढ़ के आऊंगा और फिर बताऊंगा.
ठीक है, सो आई थिंक आज के लिए बस करते हैं और परसों एक रिवीजन सेशन रखेंगे। तो रिवीजन सेशन में एक एक टॉपिक के एक एक पॉइंट्स के नोट बनाएंगे और कोशिश करेंगे फ्लो थ्रू पाइप्स को कंप्लीट करेंगे और हो सके तो कंप्रेसिबल फ्लो भी करेंगे। मतलब कंप्रेसिबल फ्लो वैसे मैं नहीं चाहता वो उस दिन करना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कंप्रेसिबल फ्लो न्यू टॉपिक ऐड हुआ है तो एक बार उसको अच्छे से रिवाइज कर लें, साथ साथ उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लें। बाकी हमने फ्लो थ्रू पाइप्स तक तो अच्छे खासे क्वेश्चंस किए ही हैं, तो ठीक है। तो चल ठीक है, फिर दीपांकर मिलते हैं, खाना वाना खा लो और क्या कहते हैं, फिर मिलते हैं। जो हो गया है, हाँ, दोज टॉपिक्स विच आई हैव डन, सो इस वीक नेक्स्ट 7-8 डेज में तो मैं उनको रिपीट नहीं करने वाला हूं, बट इन दी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी I will bring 5 hours session of heat transfer for 2 days and 5 hours session of fluid mechanics for 4 days. So in those 4 days we will revise all the chapters with some specific questions. Specific question मतलब कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिस क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स कवर अप हो रहे हैं, सो फ्लूइड स्टैटिक का ऐसा क्वेश्चन बना लिया जिसमें कंप्रेसिबल फ्लूइड का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है और उसमें हाइड्रोस्टैटिक फोर्स भी निकाल रहे हैं और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का स्पेशल केस भी है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस करेंगे और उनसे प्रीवियस ईयर चैप्टर भी रिवाइज करेंगे। हाँ, कंप्रेसिबल फ्लो जो हो गया है वो दीपांकर तभी अटेंड, एक्चुअली क्या है कि मेरे बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स हैं ना, सो उस टाइम पे कंप्रेसिबल फ्लो नहीं था सिलेबस का पार्ट। सो कंप्रेसिबल फ्लो वी केम टू नो अबाउट कंप्रेसिबल फ्लो ओनली ऑन अगस्त। सो दो स्टूडेंट्स हु डिड विद मी जून जुलाई, सो दे वर क्वाइट बिजी, तो मैंने उनको यही बोला था कि अगर आप अटेंड कर पाओ यूट्यूब पे सेशंस तो ही देखना, अदरवाइज अगर आप अटेंड नहीं कर पाओगे तो मैं फिर इलैबोरेट सेशन तो नहीं मगर 4-5 घंटे का एक अच्छा खासा सेशन करा दूंगा, तो उनके भी वो काम आएगा ऐसा। सो वो वैसा नहीं रहेगा, 12 घंटे 16 घंटे वाला नहीं रहेगा, वो एक छोटा सेशन रहेगा रिवीजन के लिए, ठीक है, ताकि उनका भी काम हो जाए और हमारा भी रिवाइज हो जाए। तो देख लेना, मैं मतलब डेट्स पहले से ही बता के रखूंगा, तो जिस दिन सूटेबल लगे उस दिन का वीडियो वॉच कर लेना, जिस दिन का लगे कि इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। बट अगर बेटा ऐसा है कि तेरे को आता है फिर उसको टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, तो तू मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दे, मैं पहले ही बोल दिया मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है फिर, ओके, सो ठीक है गाइस, सी यू सून एंड I will meet you day after tomorrow. Thank you. Bye bye. Good night. Heat transfer questions are over except for in total 3 questions. Except for 3 questions. One question you could have done today also, but I want to explain the temperature profile in a little more detail. So all those 3 questions we will do in this miscellaneous part. Bye bye. Good night. Have food and sleep on time. Good night.